हेलो एवरीवन वेलकम एवरीवन जय जगन्नाथ सब भल थो आज टी डिले होगा बिकज ऑफ द ये बहुत सारा जेहेतु अपरूटिंग होता थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो टी प्रॉब्लम रहा सो आई एम गॉट गेटिंग डिले एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सो आज एग्जाम आशा कर समस्त बहुत भलरे जाइथिबो बट किछि डरिवार नहीं मु एकदम आज लास्ट को बढ़िया भाव एक्सप्लेन करी कि कट ऑफ एथरका रिमार्केबली बहुत ही लो जीवो दिस इज गारंटेड फ्रॉम माय साइड राइट এটা डेफिनेटली जो जहाँ जहाँ प्रेडिक्ट करे डेफिनेटली सब वर्ष थ्रू आउट में एक्सपीरियंस यू नो फ्रॉम द मोर देन 13 इयर्स 14 इयर्स रो एक्सपीरियंस मु कहबी कि लास्ट जो वर्ष कहिची सेही हिंसे जे बट वर्तमान एई वर्षर क्वेश्चंस ओसीएस 25 रो क्वेश्चन वाज एक्सट्रीमली यो जदी मु कहबी चैलेंजिंग थिला हैला डिफिकल्ट मु कहबी पण जो माने किछि लेवल पिला भी करछन जोटा वेरी रेयर बट इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सो केही भी माने टेंशन नियनी डेफिनेटली इट विल वर्क मुझे कहबी एमिति मैजिक नंबर कहबी जोते कि समस्त बहुत खुशी हो जिवो देखो सी सेट पेपर 2 जोटा अछि डेफिनेटली सी सेट पेपर 2 जोटा सेटा टिके तो माने पास मार्क ता करिया पड़ियो बट डेफिनेटली हैला आरंभ करिवा सेक्शन जदि मु कहबी कि हमरो सी हैला सी रु जदि मु कहबी हमरो टेस्ट बुकलेट नंबर सी रु मु आरंभ करिवि आ ता पूर्व मु टिके डाकी देबी आमर दी जन जो मैंने सांगर अच्छा आज डिस्कसन टिके जो ओसीएस रैंक होल्डर दी जन जन सत्यजित पट्टनायक सर आसत एंड रामचंद्र नायक जी की एथर का ओसीएस रैंक अच्छा 50 रे अच्छा डायरेक्ट सिटी ओके सो सत्यजित सर जोटा रहा सत्यजित सर हेले तुम बर्तमान अच्छा ओसीएस ओएफ टिके देव Myself Satyajit Patnaik and I am working as Assistant Commissioner in City GST Department in Raurkela. अच्छा ओएफएस ऑफिसर थे 2022 बैच रो हला 2020 बैच हां 2020 बैच जो 22 जो रिजल्ट वाला 2020 बैच रो नाउ इज माने वर्तमान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जीएसटी राउरकेला अछंती ओके लेट्स वेलकम हिम सर आपण बसंतु विल वन बाय वन आउ एपटे रामचंद्र नायक जो एथर का ओसीएस रैंक होल्डर्स 50 रे ही से भी टेक पार्ट करबा समस्त को एनकरेज करेबे वन बाय वन हम सब डिस्कस करबा हला प्लीज टेक योर सीट हम डिस्कस करबा समस्त ठीक अछि सो आरंभ करबा वन बाय वन करी कि मु आरंभ करछि जस्ट अ मिनिट ओके सो क्वेश्चन नंबर प्रथम देखिबा am I audible to everyone let's see गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग समस्त को वेरी गुड इवनिंग है क्वेश्चन बुकलेट नंबर सी आम आरंभ करिया ठीक अछि बुकलेट नंबर सी बुकलेट नंबर आरंभ करिया राइट वन बाय वन समस्त खाता पेन धरि के बसथिबा विथ एक्सप्लेनेटरी पूरा रहइबो विथ एक्सप्लेन विल डिस्कस ठीक अछि किछि भाबियार नै सब बडे लास्ट बेल को मैजिक नंबर कहबी किछि टेंशन नबार नै एकदम बहुत इजी जहाँ भी होची देखो किछि सेंति मन टेंशन नहीं जहाँ हेची प्रोपोर्शनेटली समस्त पई समान हेची सो नो नीड टू टेक टेंशन जदी बढ़िला समस्त बढ़िबो जदी कमिला प्रोपोर्शनेटली समस्त कमिबो आ डेफिनेटली मु एतिकी शॉर्ट एथर का बहुत ही कम कट ऑफ जीवो हैला बट स्टे विथ दैट वन हम आगे एनालिसिस कर डेफिनेटली हैला धैर्य सहित अपेक्षा करो डेफिनेटली विल डिस्कस मु कहि देबी काहर को कैटेगरी केते रैंक जीवो हैला सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन देजी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग your purposes in Indian currency is fully convertible select the follow the correct answer code या भितर एडा this is Indian economy this section is come from economy right economy Indian economy रो आछि एठी right correct code दीजी your repatriations of remittances absolutely this one is correct interest payment of foreign loans that is also correct डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एटा जो देछि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जदि देखिबा दिस इज जदि रहला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रे हला एठी रहिबोनी हमर एक्चुअली डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाही प्लीज मेक ए नोट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाही हला देन इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज देयर प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज देयर इज नो डायरेक्ट सो आम ये एलिमिनेट कले 3 के एलिमिनेट कले तुम ये निजे देख 3 एलिमिनेट माने कल माने कोठी फटाफट एटा काटी देला ठीक अछि रहिला कोन लास्ट को ट्रेड ऑफ कोर्स ट्रेड इज दैट तुम निजे देखो एठी रहिला माने तुम एठी आंसर बाहर जो दीटा एलिमिनेट कला परे सो आंसर आछि तमरो बी फॉर बॉम्बे प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस इज बी फॉर बॉम्बे 1 बी नेक्स्ट क्वेश्चन
100 क्वेश्चन अच्छे टिके करेक्ट करिया टिके स्पीड रे जीवा समस्ते कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन हला इनकरेक्ट वन देखिबा कोठी प्रथमे देला इट इज योर again it's an question from your history ठीक है history Mogaliputra Tisa and preside over the third Buddhist council this is correct then second dichi your Dharmamartha the last Mauryan ruler killed by the Purushamitra Sunga so एठी रहिबनी actually एटा जदी आंसर जदी तमे देखिबो it is your Bridhamartha ठीक अछि Bridharartha sorry Bridharartha एठी जदी रहिबो this is your मैं लिखि देउछि Bridharartha हला जे कि रहले सो एठी स्टेटमेंट भूल गेला आंसर कोन देछि इनकरेक्ट किए एठो हमें पाइ गेले दिस इज इनकरेक्ट नेक्स्ट थर्ड द अर्थशास्त्र द इंपोर्टेंट ऑफ लिटरेसी सोर्स ऑफ द मौर्यन पीरियड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट and the Rajukas and the Yakutas हला Yucatas the administrative officers during the Mauryan time actually एटा जो थिले Mauryan time एटा अकबर का टाइम रे राइट जदि हम देखिबा सॉरी इट इज सॉरी आई एम सॉरी दिस इज अशोकन का पीरियड रे थिले दिस इज अशोकन का पीरियड रे थिले सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट सो आंसर इनकरेक्ट कोड रहला बी फॉर बॉम्बे एक्चुअली बहुत जनकर मु प्रॉब्लम देखुची कोन हिचे से माने करेक्ट इनकरेक्ट भीतर करेक्ट को मार दैछन अगेन मु सेटा आज भी कहबी क्वेश्चन टिके क्लियरली देखाउन टिके जूम करके देखो बिकॉज एक्चुअली कोन होछ ना जोटा हमें जोटा देखुचु जोटा नेइची मु तमरो पीडीएफ करके स्कैनर टिके रोचे आगु टिके मुनी देखा हबो भलरे हला टिके क्लियरली टिके एडजस्ट करो जूम करके आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज जूम करके देखो काहे ना ओरिजिनल क्वेश्चन जेतला आसे सेतला टिके तमरो रहिता आगु को अछि हला टिके फाटी जाय एक्चुअली सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट expounds the your prana ala pranagiyotra the fire oblation through breath ru जोटा आंसर इज एठी देखिबो इट इज सी हला दैट इज छांदोग्य उपनिषद जदि हमर देखिबा या ऊपर कि कोन रहउची टिके लेखि नियो द चैप्टर 5 मेडी कोन कहली द चैप्टर 5 ठीक अछि चैप्टर 5 ला प्लीज मेक ए नोट चैप्टर 5 ऑफ छांदोग्य उपनिषद हला छांदोग्य Upanishad let's talk about this one talk about that talk about the breathing upar kochi which is which your replaces the external ritual fire sacrifices actually ए जो 5 टा chapter 5 रे जोटा चांदोग्य उपनिषद रे लिखा हिची that your replaces the your external your sacrifices fire sacrifices and rather it is yoga upar सिखौची जोटा के breathing through so answer is your C is the correct answer please make a note of this then 4 number all the information concerning the so called black hole episode is found single sided accounted by the Englishman ठीक है question भला बचनो what is the name of Englishman so actually this is your C that is John Holwell एटी गोटे जिंस लेखा जदि हमें देखिबा जॉन जो रहितले सी इज बेसिकली ही इज एन जदि तांको विषय में जानिबो ही इज एन बेसिकली एन ब्रिटिश इंडिया एम्प्लॉय and he was basically talk about कहा विषय कहउतले he was talk about the black hole of Calcutta हला black hole Calcutta incident ठीक अछि black hole कोलकाता incident हला और सेतबेले थला कलकत्ता कोलकाता incident ऊपर से कहउचंदी ठीक अछि ब्लैक होल कोलकाता इंसिडेंट ऊपर से कहिचंदी एंड इट वाज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द 1766 से ईयर रे हेतला क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अनंत वर्मन चोडगंगदेव शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द कलिंगनगर जोटा कि मुखलिंगम टू कटक इन मॉडर्न कटक एटा एब्सोल्युटली एटा जदि हम देखिबा हला दिस इज करेक्ट हला से करिथिले चोडगंगदेव केबे करथिले it was he shifted in 12th century please make a note of this I hope samaste खाता पेन धरि के बस्तियो 12th century shift करथिले this was correct then Ananga Bhimadev III defeated the your Kalachuris and captured the major part of the western Odisha this is also correct third Narasimhadev I defeated your Tugril Tuga Khan the Muslim governor of Bengal that is also correct fourth re judge dela ki Bhanudev II erected the Ananta Vasudev temple at Bhubaneswar एटी भूल हेगला एक्चुअली एटी भानुदेव हला भानुदेव जोडी अछंती कि भानुदेव 2 करनांती एक्चुअली एटी क्वीन चंद्रिका देवी एक्चुअली के रहबे क्वीन चंद्रिका देवी ठीक अछि क्वीन
Chandrika Devi लेखिन Queen Chandrika Devi made this temple and he is the daughter of Ananga Bhimadev III. Queen Chandrika Devi was the daughter of your Ananga Bhimadev III. So answer जदि हम देखिए 1 2 3 पचार above statements are true ताले तुम्हार कौन रहिबो only 3 तीनटा. So answer रहिबो that is your C is the correct answer. Please make a note. C is the correct answer. इटी किए रहिला C. देखो यूपीएससी स्टाइल देछि बट किछि करबानी काहेकि ना मो वर्तमान कहूची कमिशन देखुछि कि 8th पे कमिशन लागू हबो नहीं 8th पे कमिशन लागू हेले एते गुडा पैसा मिले सो क्रीम स्टूडेंट्स को ही समान चूज करछनी. सो एतरे किछि डरिवार नहीं हला जस्ट फॉर फन मेकिंग पी एकदम कूल रुओ. अच्छा 7 5 6 देखिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अगेन in 1607 Jahangir declared the Odisha as a separate state. बिल्कुल सुबह that is correct. Then एठी जो देछि the Subha of the Odisha was divided into 7 your sarkars. That is wrong. So it is 7 sarkars hoboni. That is your rahibo एठी 5 hela. This is your 5 sarkars. एठी 5 number hobo. So it is not correct. Answer this one. This one is also correct and C is also correct. The Rajmahendra is one of the sarkars. That is also correct. And Hasim Khan was the first Subakar of Odisha. That is also correct. So it जो हेइथिला मन रखो ये जो 5 provinces this is during the time of Akbar. ठीक है जी during the time of Akbar का समरी हेइथिला एटा हैला. एंड सेही समय 5 जो सरकार्स थिला सेटा को जगह थिला 5 सरकार्स जोटा थिला कोटी थिला हैला. ए जो 5 पांचटा कोटी थिला कटक भद्रक हैला भद्रक सोरो रेमुणा. ठीक अच्छे कटक भद्रक सोरो रेमुणा आ गुटे कोन रहि गेला. देन जलेश्वर मैक्सिमम तमे देखिबो कोस्टल बेल्ट री से मैंने से रखिथिले हैला. अकबर सबने कोस्टल बेल्ट री सब जंक थिला राइट. नेक्स्ट आगु को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विथ सो आंसर इठी हमें कोन पाइले बी इज द करेक्ट आंसर राइट. समस्त नोट करनियो. कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विथ रेस्पेक्ट टू द प्रजा मंडल मूवमेंट राइट. प्रजा मंडल मूवमेंट को हमें देखिबा. देन किए थिले फॉलोइंग पर्सनालिटीज विथ रेस्पेक्ट त माने प्रजा मंडल मूवमेंट रे को माने एसोसिएटेड थिले. नंबर 1 Sarangathar Das, he is connected. Then Pavitra Mohan Pradhan, he is also connected. He was also connected. Then Hare Krishna Mahatab sir be connected thile. Then Rajendra Narayan Bhanjedev, actually she connected not thile. He was opposing the Praja movement. एटी मुले कहि दोछि हैला. राजेंद्र नारायण भंजेदेव जो थिले से कानिका राजा थिले. ठीक अछि. He was opposing the movement. ठीक अछि. Opposing the Praja movement. ठीक है. एंड ही वाज बिलोंग्स टू योर कानिका. ठीक है. कानिका को से बिलोंग करथले. सो आंसर जदि हम देखिबा एटी किए. सो एटी दिछि अगेन नॉट करेक्ट. देखो आंसर दिछि व्हिच हाउ मेनी दीज आर was or were not associated with the movement. So answer एटी कोन होबो 3. 3 is the only not correct. So answer is A. Answer is A. Only 1. आगो बढे आ चॉइस रहिलानी नाही. बहुत से माने पकोचंती. You have to be very alert. You have to be very alert. Otherwise सबु जानिथिले भी हबनी हैला. 8 number question. What is the pupil teacher ratio PTR at the primary school level and mandatory for the right to education act? बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा. राइट टू एजुकेशन एक्ट जदि हमें देखिबा एटी पीपल रेशियो जदि देखिबा इट इज 30:1. मुझे एक्सप्लेन करछि. आंसर इज योर सी. ठीक अछि. अच्छा वर्तमान एटी मु दुईटा सेग्रीगेशन करूछि एई क्वेश्चन रो हैला. एई क्वेश्चन रो राइट टू एजुकेशन एक्ट रे कोन करछि दुईटा मुझे कौन लिखली राइट टू एजुकेशन एक्ट जोटा रही. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अनुसार दुईटा सेग्रीगेशन अच्छी. गोटे है प्राइमेरी. ठीक अच्छे. प्राइमेरी आ गोटे समस्त लिखी नि. आ गोटे है अपर प्राइमेरी. आ गोटे है अपर प्राइमेरी. सो प्राइमेरी रे रेशियो अच्छी केते तुमरो 30:1. आ गोटे अच्छी किए आ गोटे अच्छी तुमरो अपर प्राइमेरी रे 35:1. प्राइमरी माने कोटा क्लास 1 रु नै की क्लास 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी जदी रहउछि केते क्लास 6 to 10. ठीक है. क्लास 6 to क्लास 6 to 8. मन रख. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जहां भी जिंस क्वेश्चन देबी करेक्ट एक्सप्लेनेशन सहित हमें देखिबा. सो आरटीआई एक्ट 2009 हैज सेग्रीगेटेड टू पार्ट्स प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी. प्राइमरी इज द क्लास 1 to 8 एंड अपर प्राइमरी जोटा आछे अपर प्राइमरी तमरा क्लास 6 to 8 आछे.
30:1 प्राइमरी एंड 35:1 ठीक अछि मैक्सिमम क्वेश्चन जदि मैं देखुतली बहुत जगह कि डिस्कशन रे हम जोटा करिसेंती कि तमर जदि हम कहबी कि टेस्ट सीरीज रे बहुत सारा जिंस क्वेश्चन आसी मन आज का डेट जदि मैं क्वेश्चन देखिबी इट इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव बहुत एनालिसिस दोची खाली ट्रेडिशनल जिंस बिल्कुल भी पचार नांती नै कि सो आमे जदि देखिबा परे परे मोर परे परे एठी जो माने अछंती हैला योर ओसी सक्सेसफुल जो माने सर माने जो माने अछंती सब डेफिनेटली से माने भी कैरी फॉरवर्ड करिवे समस्त हम वन बाय वन सब मिसी करबा हैला 9 डिस्कशन टा अपन 9 जदि देखिबा which one of the following statement not correct respect to triple test formula triple test formula जदि देखिबा the triple test formula is established by the Indian Parliament 8 ही भूल गला it is not established by the Indian Parliament no it is established by the Supreme Court हैला established by किए करछि Supreme Court of India ठीक अछि Supreme Court of India आउ ए केस टा कोथरे हेतला तमे देखिबो to be in very detail it was in the case of Vikas Krishna Rao Gawali versus state of Maharashtra मुझे लिखि दोछु को केस रे in the case हैला को केस रे respective case रे case of your Vikas Krishna Rao समस्त लिखिनियो Vikas Krishna Rao Gawali versus state of Maharashtra समस्त को विजिबल होचे आई होप एवरीवन इज विजिबल समस्त देखि परछो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राइट अच्छा एवरीवन इज विजिबल टिके ऊपर को रही होचे की अच्छा नेक्स्ट सो आंसर इटे में पाइले ए बाकी तीनटा करेक्ट अछि बी सी डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 राइट क्वेश्चन नंबर 10 मु देखुची क्वेश्चन विजिबल होचे लेट मी नो क्वेश्चन समस्त को with reference to Supreme Court of India consider the following statements it has the original jurisdiction and dispute between the center and state absolutely correct बिल्कुल absolutely correct then जदि हमें देखिबा कि fourth रे the it can issue the writs for the enforcement of the fundamental rights absolutely correct it acts as an court of appeal absolutely correct fourth रे it can amend the constitution ठीक अछि एठी जदि हमें देखिबा कि एठी भूल हेगला ठीक अछि इट कैन पार्लियामेंट हैज द पावर अमेंड करि परिबनी सुप्रीम कोर्ट रे एटा नाही सुप्रीम कोर्ट करि परिबनी एठी कोन होबो पार्लियामेंट एज पर मिडि लिखली कोन एज पर आर्टिकल 368 पावर पार्लियामेंट हैज द पावर हला पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड हैज द पावर टू अमेंड टू अमेंडमेंट सिंपल सो आंसर इट रहला कोन 1 2 3 so it answer is your A हैला 10 रो क्वेश्चन रो आंसर हैला A राइट नेक्स्ट देखिबा 11 देखिबा द पंचायत denies forest access to a community citing conservation of laws despite traditional your usage rights so एटी जदि देखिबो so क्वेश्चन दला which principle it violate को प्रिंसिपल टा कोटा violate करछि so answer देखिबा legal positivism then procedural fairness only then substantive justice and the community right एटा को करछि राइट सो बाकी सब जिन ठीक अछि बस एटा को ही वायलेट करछि सो एठी रहबे कोन कम्युनिटी ट्रेडिशनल राइट्स टू द लैंड टू बी अफेक्टेड एठी एक्चुअली एटा ही करिवो काहे कि ना ए केस रे कोन हो कम्युनिटी जोटा अछि ट्रेडिशनल राइट्स को एटा वायलेट करछि राइट सो आंसर इज योर सी 11 इज योर सी 12 स्टेटमेंट्स पुनी देला स्टेटमेंट आ एक्सप्लेनेशंस ऊपर not all rights based laws lead to equitable outcomes okay this is correct not all rights based on the laws lead to the equitable outcomes absolutely correct then structural inequalities affects to the access to these rights okay absolutely जदि हमें structural inequalities नबा कोन एटी मु देखिली structural inequalities एटा भी correct this one is correct but प्रथमे देखिबा कि structural inequalities कोन what do you mean by the structural inequalities कहला माने कहा को बुझो poverty ठीक अछि poverty social status रे कोन होबो social status जदि हमें देखिबा you can say the you know right to dignity मु कहबी dignity your access to resources or opportunities access to resources or government scheme जहा भी दे परिबो social status रे then and सबुठ बड़ जिंस हला poverty so ei जो जिंसटा अछि this affects
the access to these rights? Definitely. So answer jodi hame dekhiba, it is A. A is the correct answer because explanation can directly satisfy your the S ku karuchi, right? So both S and E are correct, and E is the correct explanation of S. 13. The Assam Assembly election was held recently. Newly delimited constituencies. Consider the following statement respect to the delimitation process. Right? Delimitation process को नहीं क्या मैं देखिए Assam रो, right? So first the कि delimitation was conducted in the Election Commission of the India 2023 on the basis of 2001 census figure. That is also correct. Prior to this, the constituency were constituted as per the delimitation order 1976. Okay, say light दे दो. I would like last. Okay. Then it is mandated. जदि हमें देखिवा, it is mandated by the केबे इतला delimitation section 8A mandated by it is लिखिनियो mandated by section 8A. Section 8A mandated by section 8A, likely section 8A of the representation of people Act 1950 1950. This is why. Then prior to this the constituency were as per the delimitation 1976. That is also correct. This is also correct. 3 section 80 represent the People's Act 1950 जो हमने पढ़ लेना provides for the special provision for the delimitations for the Assembly of Assam, Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh. This is also correct. Fourth रहेगा जदि हमें देखिए SC है ना, following ये जो final order नहीं कि scheduled caste assembly seats have increased from 8 to 9. This is absolutely correct. It is scheduled caste, not Supreme Court है ना. तो बहुत चालाक रे देइछन Supreme Court है ना, एटा नो, it is scheduled caste and ST है ला कि scheduled tribe 6 to 9. So this is also correct. जदि हम answer देखिबा, all are correct and it is your D for Delhi है ना, all 4 सब जंगा इटी correct अछि है ना. Please make a note, all are correct. ठीक अछि. Okay, just 1 second. Next देखिबा 14 with reference to fly ash पुनी असला तमर environmental questions with reference to the fly ash management and utilization in India. India, consider the following statements. देखो fly ash again your environment question. Fly ash ऊपर देइछे, fly ash management ऊपर देइछे questions टा. So unscientific देखो question जो देखुछो तमे ना, it is clearly वर्तमान question ही सेमनी देखा होची, बहुत छोट छोट आकार देखा होची हला, एकदम से माने गेंजी गेंजी, it's very bulky type रो बही भलिया समान देइछन. So you all have to be patiently have to listen and adjust that one, right? So unscientific disposal of fly ash can lead to the land degradations and ecological risks due to toxic elements and particulate matter. Absolutely correct. Second, thermal power plant in India has mandated to achieve 100% fly ash utilization within specific time frame. हला एटी जदि हमें देखिबा कि एई क्वेश्चन टा भी जदि हमें देखिबा कि दिस क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट, कारण जदि हमें देखिबा कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ का हम कहली, एज पर MOFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ए मिनिस्ट्री जदि हमें देखिबा सेमान कोन कहचंदी 3 to 10 years भितरे डिपेंडिंग ऑन द प्लांट एज, एटा जो करिवो प्लांट पावर प्लांट माने in 3 to 10 years, ठीक अछि 3 to 10 years भितरे एटा रहइबो. सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट हैला. जोटा मु कहछि सेटा करेक्ट कर, जहां मार्किंग आगुरु अछि प्लीज इग्नोर दैट वन बिकॉज़ इट इज जोटा कि हम रेफरेंस नै छु को भी XYZ स्टूडेंट. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू हैला गो फॉर दिस वन. सो थर्ड इज दैट्स वन, द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाई एश इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब पावर प्लांट रो जहां भी किछि बाहर छि, दिस इज बिकॉज़ ऑफ माने जोटा यूटिलाइजेशन होछि सीमेंट इंडस्ट्री रे, ठीक अछि हैला. माने तमर जो मेकिंग तमर रोची सिमेट्री इटा जो बना होची सीमेंट इंडस्ट्री, मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्री में फ्लाई एश दरकार होची. इवन इफ तमर इटा रे भी तयारी सेटा मिक्स होची, इवन इफ योर NH रोड रे भी जतले सेटा भी मिक्स होची फ्लाई एश. सच एन इंपोर्टेंट फ्लाई एश काहे ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करनी है हैला पानी टा. मोर देन 300 मिलियन टन्स जोटा देइची फ्लाई एश वाज सिग्निफिकेंट. एटी भूल हे गेला एक्चुअली जदी तमे देखिबो
ईयर 2000 गोटे मु दउची एठी गोटे रिपोर्ट टा हला गोटे एनालिसिस टा गोटे डाटा दउची जदि हमें ईयर देखिबा 2022 23 रो ताहले से समय कोन हेतला 300 टन्स रो जनरेट हेतला आई एम टॉकिंग अबाउट 300 जदि मु देखिबी कि इट इज 300 मिलियन टन्स रो जनरेट हेतला फ्लाई एश हला फ्लाई एश जनरेट हेतला पाका पकी 300 मिलियन टन रो हला एटी टिके माने जस्ट एटी क्लोज मु टिके अप्रोक्सीमेट कर देले एक्चुअली देखिबो 275 रु हला 275 रु 285 भाव मु तुमको एटी गोटे करेक्ट जिनसटा कहूची केमती 2022-23 रे रिपोर्ट कहूची कि 275 रु 285 भितर मिलियन टन रो फ्लाई एश जनरेट हेतला हला फ्लाई एश जनरेटेड इन इंडिया हला जनरेटेड तमे भाबो जदी 4 वर्ष तळे 3-4 वर्ष तळे एतिकी थिला क्लोज टू 300 तामने डेफिनेटली वर्तमान जो हमर विकसित भारत रा कांसेप्ट अछि डेफिनेटली हमर आटू निश्चित रूप 40% अधिका थिवो माने एटलीस्ट 500 टन्स ऊपर थिवो सो एटी जदी देखिला कि मोर देन 300 मिलियन टन्स ऑफ द फ्लाई एश वाज सिग्निफिकेंटली यूज्ड इन 2024-25 एटी बोले गेला हला वर्तमान 24-25 जदी हमें देखिबा डेफिनेटली डाटा सेज इट इज मोर देन हला सो आंसर जदी देखिबा इट इज योर सी ओनली 3 देखो किछटा क्वेश्चन एटी डिबेटेबल रहिबो बट जदी रिपोर्ट अनुसार हमें जिबा डेफिनेटली रिपोर्ट ताको समान धरिबा बट लेट्स होल्ड ऑन दिस क्वेश्चंस बट आई विल से रादर it is your 2024-25 देखो it is definitely is more than it should be not 300 हैला it is the it should be जदी एटी लिखा हिता at least 400 or 450 million ton then it could have correct we cannot say because 2022-23 रे थिला जदी हमें 2 वर्ष 3 वर्ष आगु को नोचन definitely it is a sure shot jump right so I'm a bit skeptical so answer is your C only 3 हैला 15 number question sir biodiversity includes diversity of genetic species ecosystem हैला ecosystem levels बिल्कुल definitely it is correct 1 second is it okay to everyone अच्छा just a minute शुभुची is it audible ठीक होची अच्छा am I audible to everyone let me know is it okay to everyone okay next देखिबा next देखिबा the this is one is correct second देखिबा term biodiversity was popularized by the Edward Wilson हैला this is also correct actually जदी देखिबा Edward Wilson एटा करथिले and it is coined by जदी देखिबा okay thank you Mangal thank you it is जदी देखिबा कि it is coined by किए it is coined by Thomas हैला sir Thomas Love in 1980 एटी लेखिनियो सर थॉमस को कॉइन करथिले 1980 मसिया रे बट पॉपुलराइज एटी क्वेश्चन देछि कोन पॉपुलराइज्ड सो एडवर्ड विल्सन इज करेक्ट राइट एटी गोटे आउ गोटे तमे पाई गलो नेक्स्ट ईयर पाई क्वेश्चंस माने पद थर्ड देखिबा बायोडायवर्सिटी रेफर्स ओनली टू स्पीसीज डायवर्सिटी एटी ओनली जो लिखितला एटी भूल गेला अरे भाई एटी ऊपर पा देला जेनेटिक स्पीसीज आउ इकोसिस्टम तो खाली स्पीसीज केमते हबो also biodiversity तीन भाग रे करे जदि हमें biodiversity नबा biodiversity it has got 3 गोटे हला तमरो जेनेटिक हला गोटे हला जेनेटिक आ गोटे हला स्पीसीज तीनटा आ गोटे हला इकोसिस्टम ठीक अछि आ गोटे हला तमरो इकोसिस्टम ए तीनटा रे प्ले करे सेठी क्वेश्चन पचास खाली स्पीसीज देछि तो खाली स्पीसीज हबनी तीनटा जंक हबो सो एटी तीनटा हला रॉन्ग हला 3 इज रॉन्ग ऑल तीनटा हबो so 1 2 are correct so question is answer is your A please make a note answer is your A hela answer is your A then 60 number question mu dekhibi consider the king Rajendra Chola hela Rajendra Chola jodi dekhibi Rajendra Chola jodi dekhiba about king Rajendra Chola one he assumed the title hela kadam your dekhibo ki kadram kodan after his naval expedition jodi eta dekhiba this is correct hela naval expedition Southeast Asia pore seta karthile he conquered the Khmer empire this is
बिल्कुल नुह खेमर एम्पायर से कन्क्योर करना था he was gotten diplomatic relations with Khmer empire, right? Third ray, he promoted local self governance, bilkul absolutely correct this one, because he's continued chola dynasty जो tradition टाको से continue करते, so he जदि देखिबा कि promoted the local self governance with हैला जदि देखिबा with respect to, or we can say continue the Chola dynasty, हैला your same things जो अभी से माने रखिथिले हैला. Fourth रे he was succeeded by his son Rajendra II, सेठी भूल हेगला तंकर son का ना कोन थिला, he was जदि देखिबो कि राजाधिराज चोला 1 हैला, राजाधिराज चोला 1 हैला. So answer इट रहला कोन कि only 2 correct, दीटा statement correct, so B for Bombay, right? B for Bombay is the correct answer. Then 17 रे Maidan Salvo launch and naval anti-ship जदि देखिबो it's an again science type questions. Missile short range was conducted ITR Chandipur जोटा हमर अछि भद्रक रे, which of the following is not true, it is not true किया भितरु नो. 2 missiles were launched in quick succession हैला, एटी 2 ही हबनी. 2 missiles were launched in quick succession from the your same जदि देखिबा कि same fire jet, so एटी रखियो कि 82 missiles hobani, it was single missile, it bhule gela, this is your single missile हैला. single missile launched from the Sea King 42B helicopter, how to itla Sea King 42B helicopter how to launch itla single 42 it lekiniyo 42B helicopter ru launch itla. Then it is developed by the Tata Advanced System collaboration the DRDO, it bhule gela, it single DRDO करछि, there is no collaboration, only DRDO मन रखो only हैला. हमर इंडिजिनियस को लेके इंडिजिनियसली DRDO ऑर्गेनाइजेशन, ठीक अछि. थर्ड रे it has a jet vane control system developed जदि देखिबो इंडिजिनियसली, so it जदि देखिबो answer is 3, so एटी देछि कोन not correct, so not correct हम कोन भाबले only 1 2, so 1 2 answer is your A, please make a note, answer is your A, right? 18 रे forum shipping refers to, actually देखिबो it is choosing an favorable court for litigation. forum shipping कौन करे, forum shopping रे, forum shopping देखिबो it है ना, इतरे कौन हुए कि कस्टमर सबले लिटिगेशन रे जो देइते से करे कि नहीं, it should be in favor of his wish or wanted, or जहां भी से पिटिशन देछि ता फेवर आसे. So forum shipping basically choosing a favorable court for your litigations, right? Actually questions आउ ट्रेडिशनल पकोन से माने बहुत सारा करंट ऊपर जिंस जोटा कि कस्टमर वर्तमान जो रोची जो बहुत सारा जोमाटो हैला, मेनी रेस्टोरेंट से माने मन इच्छा जीएसटी पके दोचंदी, जहां पाइले कर दोचंदी, द कस्टमर्स आर एक्सप्लॉइटिंग साइबर, जदि देखिबो साइबर ये बहुत सारा. सो बेसिंग ऑन दैट जो सब होची हैपनिंग्स से लॉ गुडा ऊपर क्वेश्चंस गुडा से माने मोस्ट जदि देखिबो कि एप्लीकेशन पार्ट रे बेसी ध्यान दोचन क्वेश्चंस गुडा को जहां जणा पड़ची क्वेश्चंस रु हैला. with reference to the thematic coverage of the 7 chakras of Indian AI Impact Summit 2026, consider the following statements. Human capital is one of the key themes, absolutely correct. Social goods is a part of chakras, that is correct. And inclusion, trust and resilience centered to chakra, this is also correct. So answer देखियो it is D for Delhi, right? Astronomers begin the Webble effects or move a complex path, जदि answer देखियो in our solar system, what is the primary reason? The net gravitational force of the planet is constantly changing and rarely cancel out. Answer is your B for Bombay, to कहि दोची. Actually जदि हमें देखिबा सूर्य और अलगा प्लैनेट्स माने सेमाने कोन गोटे बैरी सेंटर बनांती, बट जदि मु कंसीडर करबी काकू, फॉर एग्जांपल सेट एनालिसिस करछु, फॉर एग्जांपल मु जदि कहबी जुपिटर एंड सैटर्न, एमाने हेले हेवीएस्ट, एमाने बहुत हेवीएस्ट प्लैनेट माने बिकॉज़ ऑफ द साइज, मामत साइज, एमाने तले चेंज करंती तो कोन हुए सूर्यंकर माने जो पोजीशन टा विथ रेफरेंस टू टोटल गोटे सिंगल सिस्टम होची, सुना गोटे सिंगल सिस्टम होची आउ एमाने दीटा सिस्टम होचन, सो एई एमाने डिवीजन को विथ रेफरेंस टू देयर इज अ चेंजेस हैला. ए जो रेफरेंस मु नेबी सपोज x एंड y, सो या भीतर कोन होबो जो इफेक्ट जो प्लेस चेंज हो, रिलेटिव चेंज हो, ताकू वबल इफेक्ट को जा, एंड दिस आंसर इज सूट टू योर B हैला. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, दिस इज योर अगेन एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मिक साइंस सुपर क्वेश्चंस. 21
PET, polyethylene terephthalate bottles are widely used to carbonate drinks. It is because of why these bottles are for single use rather than actually if you quantify way. The answer is your A. The plastics is porous and can trap bacteria if not cleaned with high heat with melt with the bottle. So answer jodi dekhibo it is A. A is the correct answer. 22 dekhibo. 22 consider the following. El Nino events are often associated with a weaker southwest monsoon rainfall over the India. बिल्कुल वर्तमान चलची हमें जानते हैं. This is correct. El Nino effect रे region देखो El Nino leads to warming of sea surface temperature in eastern Pacific, which disturb the normal water circulation. This is also this one is correct. Water circulation. So आशा देखिए both है वाकर सर्कुलेशन जो पर्टिकुलरली एलिनो जो इफेक्ट हुए आगुरी जमी कहते प्रति 6-7 वर्ष कि 7-8 वर्ष रही बर्तमान देखा सब वर्ष आसूसी. सो इट अफेक्ट्स दैट वन है कंप्लीटली जो सर्कुलेशन जो हुए साउथ अमेरिकन कोस्ट टू टिल ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया हमर एपट को. सो दैट इज एन डिस्टर्बेंसेस एपट साइड रे हमर कोन हे जे लो प्रेशर सेपट साइड रे हाई प्रेशर हे जा नॉर्मल. सो तो जे जुगु कोन हुए सो ए जुगु तमर वर्षाटा कमी जाए. सो इट इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज योर ए. ठीक अछि. आगुर मोर यूट्यूब क्लास रे भी देखिबो geography पर डिस्कस हेची सब. आगु बढ़िबा 23. consider the following statements regarding the footloose industries. Footloose industry food bin जदि देखो again Weber model ऊपर. This is again your footloose food Weber model हला Weber model ऊपर जदि देखिबो हला टिके एनसीईआरटी देखि देबो कोन इतर देछि. they are highly dependent on the availability of the bulky raw metal specific location. एटी भूल गेला हला they can be located over a wide range of regions due to minimal location constraint. बिल्कुल correct. access to transport communication network influence the location choice. बिल्कुल ठीक अछि. फूड गेन माने जोट्रे कि कोन रॉ मेटल मिसिंग जेंति मु कहबी आयरन स्टील पुरे स्टील बनाउ छै हला आयरन एना जदी फूड लूज और फूड गेन. ठीक अछि. इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. जेंति फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री हला. तो जदी हमें देखिबा कि फूड गेन जोटा होछि हमर ताकर ओजन टा जोटा बढ़ुछि. फूड लूज होछि जोटा ओजन कमुछि. रॉ मटेरियल जदी हमें देखिबा हला ठीक अछि. रॉ मटेरियल आउ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जदी कॉटन देखिबा पुणी मु कहबी यूट्यूब रो क्लास जाय के वेब मॉडल ऊपर बिल्कुल एनालिसिस करछि. प्लीज गो देयर एवरीथिंग इज देयर से डिटेल एनालिसिस करछि हला. समय अभाव रे मु टिके जाउनी आमे टिके करबा बिकॉज़ आउरी सर माने अपेक्षा करछन्ती. सो आंसर इज योर ए 2 3. सो इट देखबा 2 जदी हम आंसर देखबा 2 3 आर नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट जदी कोन हो किए एटी देखले ए. सो आंसर इज योर ए. ओनली वन इज नॉट करेक्ट. 24 अगेन क्वेश्चन आसी ईस्टर्न घाट ऊपर. The Eastern Ghats region of Odisha is of the ancient Gondwana landmass and present a stable peninsular sill structure. Absolutely correct. Eastern Ghat upre question bajachi absolutely correct. Then bachachi the regions predominantly composed of the Precambrian crystalline metamorphic rocks that undergo limited tectonic disturbances. Absolutely. जेहेतु Precambrian sill. So this one is correct. आज देखिबा R is the correct explanation. Answer is your A. मु again कहबी Precambrian silt माने कोन. Precambrian जदि हमें जियोलॉजिकली देखिबा Precambrian rocks जोटा कि केते रोची पाखा पाखी जदि हम देखिबा 2000 million years old हैला. ओडिसा रा चट्टान 2000 million years old. सो बेसिकली सेठी बहुत सारा तमे देखिबो जदि इट हैज वाइड जो देखिबा कि वाइड वेराइटी कवर्स वाइड वेराइटी ranges of covering of metallic and non metallic minerals. That is what. So it is लिखिला हैला Precambrian crystal metamorphic rocks. बिल्कुल metamorphic rock ता माने जदि सैंडस्टोन अछि हैला ताले तार मेटामॉर्फिक फॉर्म सैंडस्टोन रो जदि हम नबा सैंडस्टोन रो जदि हम मेटामॉर्फिक फॉर्म नबा जदि मु क्ले नेली मार्बल हबो हैला. सैंडस्टोन जदि नेली क्वार्जाइट हबो. तमे जो घड़ी पिंदुचो घड़ी रो कोन हबो क्वार्जाइट. आ जदि मु नेबली ग्रेनाइट रो ग्नेइस हबो. सो एवरीथिंग इज ग्रेनाइट भी अवेलेबल ग्नेइस अवेलेबल सैंडस्टोन भी अवेलेबल तार मेटामॉर्फिक क्वार्ज भी अवेलेबल. सो दिस इज पर्टिकुलर ईस्टर्न घाट से जिंस बड़े अनलाइक इन द वेस्टर्न घाट. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. 25 क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन देछि. कुकिंग कोल आउ या ऊपर दिस इज वेरी इजी. कुकिंग कोल देछि ओडिसा रा इंपोर्ट प्रोफाइल ऑफ द ओडिसा इंपोर्ट पर्टिकुलरली रिलेशन ओडिसा ऊपर इंडस्ट्रीज ऊपर पचाछि. कुकिंग कोल जदि हम देखिबा कुकिंग कोल नॉर्मली हम पाखर हैला हम जो वाणिज्य बालयात्रा जाउछु इंडोनेशिया पाखु सेठी आडो हैला. एठी मन रखियो केमते मन रखियो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साउथ एशिया. सो कुकिंग कोल इज 2 इज करेक्ट. 2 एठी हम देखिले. क्रूड ऑयल पेट्रोलियम ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल पेट्रोलियम हम आउचंती वेस्ट एशिया रु. सो 1 हेवी मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स China, Japan, and जदि हम देखिबा इलेक्ट्रॉनिक्स दिस इज बिल्कुल योर C3 and fertilizers basically हम रशिया ऊपर डिपेंडेंट रशिया चाइना एंड ओमान
है बर्तमान न्यूज पिला देखुथबो कि एग्रीकल्चर समय आसले हमर 50% इंडिया पाखरे फर्टिलाइजर शॉर्ट अछि सो हमें निजे निजे आगु सब एठू मगौथु है रशिया ओमान रो मैक्सिमम हमर आस्तला बर्तमान मासे तळर न्यूज रे तमे सुनिथबो एगुडा सो आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे राइट 26 number question again consider the following statements regarding the 16th finance commission recommendation कौन देछि 16 finance commission रे F16 trend the vertical share of the verticals are divisible pool of the central taxes 41%, the same recommended by the 15th finance commission, absolutely correct. The commission introduced the new contribution GDP criterion, weight loss 10%, tax and fiscal efforts utilized by the 15th finance commission, this is also correct. The finance commission 16 discounted revenue deficit grants, which is also known as the revenue need grants, under the article 275, please make a note, which were recommended by the previous finance commission, this is also correct है previous finance commission article 275 को reference करके एटा देइथिला, this is also correct. The commission fourth, the recommended the state should reduce the fiscal deficit by 2.5% by 2031 and center should 3.5 है ना of GDP in the same time frame. मैं लिखि देछु को पुनी कमा दे कि in the same time frame से माने एठी गोटे जिंसटा साइलेंट रख देछन हैला पिला को कंफ्यूज करिया पे, बट जदी देखिवो दिस इज आल्सो करेक्ट, बहुत पिला 4 को गलत मारछन, नो सेम टाइम फ्रेम रे सेंटर को देला 3.5%, स्टेट को देला 2.5%, ओके. So we are maintaining the federalisms because center takes more हैला more onus, so answer is D for Delhi. 27 number questions about consider the following statements, affirmative actions and the representative policy of the India and Odisha, right? The 103rd constitution amendment provides 10% reservation of EWS and Odisha has implemented है creamy layer exclusion, it is देइतला जो creamy layer exclusion एठी बोल हेगला है creamy layer exclusion एठी हमर नाही, rather not referred, एठी हमर referred करिनु, it is not referred, एठी देइतला not referred, actually creamy layer for the it is है OBC, it's not for the EWS, so it is statement of भूल हेगला. The Supreme Court judgment of Jahid Abhiyan and Union of India, EWS reservation held cannot be supplied to the sub quota within SC/ST, absolutely this one is correct. Third रे Odisha state representative policy हैला SCBC एटी OBC अपनी use the double creamy layer, एटी जति लिखिबो कि हैला एटी OBC SCBC सेम को रेफर कराई छी, but एटी double creamy layer एटी भूल हेगला. double creamy layer ने हमर only the standard criteria, we have kept the our state have scaled the standard criteria हैला standard criteria, so एटी हैला आंसर एटी भूल हेगला, ठीक अछि. नो डबल क्रीमी लेयर बोली कांसेप्ट हमर किछि नाही. Representatives of the person हैला for persons with disabilities of Odisha panchayat elected in circulator appearing total seats not the population हैला leading to under representation, एटी भूल हेगला. एक्चुअली कोन दला कि जदि देखिबो रिप्रेजेंटेशन सॉरी रिजर्वेशन जो दला, सॉरी रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, एटी कोन हला एज पर एटी लिखिनियो, एटी एज पर 2022 as per 2022 amendment act हैला amendment act अनुसार कोन रही छी हैला the focus is ensuring हैला the focus कोटी of ensuring the ensuring the representation ठीक अछि, representation not on the specific calculation, so एटी भूल हेगला. So only 2 is correct, जदि हमें देखिबा कि how many statements are correct, so only 1 A is the correct answer, please make a note of this. कौन सी जगह खाली रिप्रेजेंटेशन को कहै छी, देयर इज नो स्पेसिफिक कैलकुलेशन, दैट टू बी जो माने दिव्यांग और बेसिकली जो रिजर्वेशन पर जो डिसेबिलिटीज ऊपर सेमति किछ नाही, प्लीज मेक ए नोट. 28 नंबर क्वेश्चन, arrange the following events of the your regime of the Muhammad bin Tughlaq chronologically. So in this देखिए Muhammad bin Tughlaq it is देखिए it was in 1326 to 1327, sorry 1327 एई समय रे हितला, ठीक अछि. AD, of course AD. Then second is देखिबो it is in the Muhammad bin 1327. Third is देखिबो your planned the expedition of the your Khorsana, that is 1329 to 1330. Then your introduction of the token currency, जदि हमें देखिबो it is on the 1332 to 1333 हैला. So answer देखिबो जदि 2143, this is D for Delhi, this is correct answer, D for Delhi. 29 the Mughal school of painting is characterized by Mughal school of good evening Parijay, good evening.
Mughal school of painting is characterized by your miniature painting. This is correct. Miniature painting your jodi dekho, it is the central style ku neuchi hala, it is your central style ku neuchi. Then excellency is portrait painting and the color composition. This is also hala, jodi dekhibo ki this is also kebe hitla highly developed during hala, highly developed during Jahangir hala, Jahangir and your Jahangir and Shah Alam hala, Jahangir and Shah Alam summary hitla. Then third देखिबो keen appreciation nature, flora pun appreciation nature का appreciation, this is also correct. Four democratic and popular in content. Democratic सही समय बिल्कुल एटा नथिला. Four गलत. Fifth courtly and your artistic in content, art and culture reality, but this is also correct. Secularism materialism बिल्कुल थिला, this is also correct. And spiritual mystic हेला एटा भी wrong थिला. So हमें देखिबो the answer choose correct आ भितर किए 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6. So answer जदि हमें देखिबो it is B for Bombay. This is with explanation by talking with B for Bombay. This is correct one. 29 is B. 30. When did the Ganjam come under the British control? Ganjam जो देखिए British control under है. This is I think 30. Oh yes, sorry. This is 1766 is the correct answer. 1766 रे. जदि देखिबो कि से सब नॉर्दर्न सरकार्स थला ब्रिटिश माने हला फ्रॉम काउट नीतिले शाह आलम टू हला ए जो सही समय किए थिले शाह आलम मोगल किंग थिले शाह आलम and Shah Alam II थिले and it was occurred in 1707 हला ब्रिटिश नीतिले काउट from Shah Alam British government ठीक है British government took these northern circars से समय थिला this part of northern circars हला लेकिन एटा part of northern circars जोटा कि नेकी तमरा जाउची कोठी जोटा कि धरंती तमरा महानदी और मैक्सिमम बैतरणी नेकी टिल गोदावरी पर्यंत सेटा लंबितला है ना. देन हरिशपुर रीजन इज द ब्रिटिश सेटलमेंट इज लोकेटेड इन हरिशपुर जदि देखियो आज का डेट रे एटा जगत सिंहपुर सी इज द करेक्ट आंसर. सही समय कोन थला 1633 में सर प्रथम फैक्ट्री हला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन हरिहरपुर. एही समय कोन थला काहे केटे फेमस 1633 रे 33 AD रे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया established British East India established first factory in Odisha. ठीक अछि Odisha at कोठी at हरिहरपुर सेटा नाथला से समय हरिहरपुर at जोटा कि थिला वर्तमान रो जगत सिंहपुर वर्तमान छ ता नाटा हिची हला वर्तमान हरिहरपुर वर्तमान हरिशपुर ता नाटा हिची जो नाटा हिची हरिशपुर सेटा करथला हरिहरपुर मन रख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम सिटी फर्स्ट फैक्ट्री डेवलपमेंट. गुड इवनिंग ओके. 1332 समस्त लेखिने खाता पने जा डका होची तो कंसीडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट द प्रिविलेज मेंबर्स बाय द पार्लियामेंट. हला भला क्वेश्चन द पार्लियामेंट रे privileges should not be fettered by the article 19A of the Indian Constitution. Absolutely correct, because freedom of speech as their independent powers मन रखा है independent power. So this is correct. It would not be fettered, but this is absolutely correct. Privileges must be read subject to the article 2022 कोडियरु 22 and article 32 Constitution. Absolutely correct. Then immunity is available in the relation to both civil and the criminal procedure. भूल है गला एटी केवल civil no criminal है immunity is always subject to your welfare. ठीक अछि हिमान ऊपर नहीं कि so it is only the civil मोलेकुलर only civil no criminal it भूल है गला से है no criminal. Immunity is available in relation to the freedom of speech event in his private or personal capacity. एटी भूल है गला private personal capacity रे no, it is inside है not private, it is inside the house. जब हमें देखो it is related to your inside the house हमें देखो it is not to private. Immunity is subject inside the house ऊपर. So जब हमें देखो private or personal बिल्कुल भी no state can interfere. So answer is only जब देखो कि how many statements are correct देची, so only 2. So B is the correct answer. देखो कितने alert रहे को देखो क्वेश्चन पूरा EPSC स्टाइल रा हमको alert रहे को पड़ियो, but don't worry कट ऑफ बिल्कुल लो जीवो. In respect of anti-defection law 33, which of the following is not correct? Actually, anti-defection law is found in 9th schedule. It is your 10th schedule. It is your 10th schedule. 10th schedule. So this one is wrong.
elected members who were not initially set up by the party by the latter joint party phase system बिल्कुल एटा करेक्ट किछि समय भितर सार मानक मो डाकुची मोर सरिया सरिया हलानी nominated members face disqualification if they join a political party after 6 months हला जदि देखिबो कि एटी देखिबो this is also correct. Fourth, the Supreme Court is empowered to make rules for giving effect to the anti-defection law. एटी भूल गला पावर दिया है नहीं पावर जे दिया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर हला प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली हला it is your presiding officer of the house जे presiding officer Supreme Court को सेमति किछि दिया है this is not mentioned so only 2 3 is correct so answer जदि देखिबो एटी आंसर कोन दिछि not correct again देखो not correct दिछि so एटी रहि गेला हला not correct की आसला 1 out 4 so answer is your C is the correct answer. Then 34 which type of public policy is when individual self interest and rational choice save the political decision policy comes. This is your public choice model policy. Answer is your D for Delhi, right? Then 35 Balwant Rai Mehta committee so देखियो it is 1957 this is correct Balwant Rai 1957 रे इतला Balwant Rai committee 19 recommended to the 3-tier system 1957 रे देइतले हला this is correct relate this is correct 1 हला Ashok Mehta committee suggest the 2-tier system बिल्कुल एटा 1977 रे से देइतले then 73rd constitution amendment जोटा कि हितला 1992 रे हला सब जंग 1 2 3 4 सेम इटा हितला 1992 रे all are हला constitutional status to the panchayat 73rd constitution this is very famous we know. LM Singhvi committee recommended the gram sabha importance it was in 1986 so सब जंग correct so related is your answer is A please make a note of this. 36 consider the following regard to the Indian biodiversity conservation India uses market based instruments absolutely correct. 2 biodiversity conservation is linked to the livelihoods absolutely correct and this is livelihoods केम देखिबा if you see for the joint forest management system J for it हैला joint forest management system हिसाब रे this conservation biodiversity is really essential and this is an objective. Environmental policy third statement ignore the global frameworks बिल्कुल भूल ignore करेनी rather एटी कौन करे highly aligned with your global framework हैला like your CBD conservations on biodiversity and SDG जदि हम एते देखिबा कोन CBD हैला कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड SDG हैला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इट इज हाईली अलाइंड एटी कोडी भूलेगला इट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इज लिंक एनवायरमेंटल पॉलिसी इग्नोर एटी इग्नोर टा जो देइ दे भूलेगला अरे इग्नोर केमति कर यार इ तो कनेक्ट अछि पूरा ता संगे सो थर्ड इज रॉन्ग एटी तमे आंसर पाइगलो 1 2 4 क्लाइमेट फाइनेंस इन्वॉल्व जदि तमे देखियो 3 गलत हला 3 एटी गलत मन बिल्कुल भी हबनी कोठी ऑल भी हबनी ए भी हबनी ये हबनी आंसर एटी डायरेक्ट पाइगला A is the correct answer. एटी मिल जाउछ so climate finance involve the international cooperation absolutely correct. 37 consider the following statements with respect to the doctrine procedure established by law as provided by the Constitution of India. It protects against the executive action absolutely correct. It protects against the legislative action हैला एटी बिल्कुल did not protect करे it protect करे legislative action it did not protect likely did not protect आ को केस रे नबो मेनका गांधी केस रे हमें नहीं परिबा मेनका गांधी केस रे हमें नहीं परिबा हैला मेनका गांधी इनको केस रे हमें नहीं परिबा ठीक अछि डॉक्टर ने प्रोसीजर सर्विस लॉ थर्ड आर्टिकल 22 जरी देखबा इट इज हैला इनकॉर्पोरेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडिशनल सेफगार्ड्स आफ्टर द डिबेट इन द बिल्कुल जदी हमें एनालिसिस करिबा हैला योर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल हैला आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन ए जो जिनसर आर्टिकल 22 कहूची से केस रे हमें देखो दिस एब्सोल्युटली करेक्ट एडिशनल सेफगार्ड्स आफ्टर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. फोर्थ देखिबा इन द बैंक नेशनलाइजेशन केस द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड ए स्ट्रिक्ट एटी भूल गेला काहे कि विथ एटी लेखिनियो केस देली एके गोपालन केस हैला एके गोपालन केस रे हैला एके गोपालन केस हैला द फेवर्ड द नैरो इंटरप्रिटेशन जोटा आर्टिकल 21 सो एटी भूल गेला सो आंसर जदि तमे देखिबो कि which is correct so 1 and 3 so only 2 is correct statement so देखिबो it is your B for Bombay. 38 which of the following initiative launched by the government of India not directly associated with the carbon trading emission again environmental question so it is your perform achieve trade part हैला जदि देखिबो कि इंडिया कार्बन मार्केट पोर्टल देन प्रकृति एंड नेशनल कार्बन रजिस्ट्री जदि हमें देखिबा कि एटा हला सी इज द करेक्ट आंसर प्रकृति हला प्रकृति जदि देखिबो इट इज द करेक्ट आंसर पैट जदि देखिबो मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट नहीं सो आंसर तुम देखिबो करेक्ट इज योर प्रकृति हला
not directly associated with the carbon trading. 39 consider the following statements during the desert climate and soil. Again geography questions as puni additional so significant leaching due to हला भूल है गला अरे लीचिंग कोठी हुए जोटी बेसी वर्षा हुए तमर एडिजोल्स हला तो तमर कोठी तमर डेजर्ट एरिया है सो एटे भूल है गला रेनफॉल सेठी हुए डेजर्ट सॉइल्स आर ऑफन कोर्स टेक्सचर्स एंड वेल ड्रेन्ड बिल्कुल काहेकि बाली रे पानी ढालियो भस्किना पड़े हला सो डेजर्ट सॉइल्स आर बेसिकली वेल ड्रेन्ड हला एंड कोर्स टाउनशिप थांती एंटीजोल्स आर हाईली डेवलप्ड सॉइल्स विथ मल्टीपल होराइजन बिल्कुल भूल एंटीजोल्स आर बेसिकली यंग सॉइल्स हला यंग सॉइल्स एंड इमैच्योर्ड यंग एंड immatured horizon लिखिए immatured horizon develop so it answer 1 3 गलत only 2 is the correct answer a is 2 हैला जो आंसर देखियो it is a only 2 is correct answer is a 40 consider the following statements regarding the IPCC ठीक है climate change ऊपर it was established by the UNEP केबे इतला बिल्कुल 1988 मसिया रे by 1988 रे इतला this is correct to directly IPCC directly enforces emissions reductions does not it bhule gala directly no this is your indirectly doesn't enforce it doesn't enforce it does not enforce man rakho it does not enforce directly kare bhule thi directly hela then fifth assessment report highlights rapid warming since 1950 absolutely correct IPCC provides scientific basis for the policy making this is also correct so 1 3 and 4 so all is correct C is the correct answer only 3 hela statements only 3 41 देखियो ठीक अछि 41 देखियो consider the following statements with respect to your Prasad 2.0 it is a mobile app launched by the social justice empowerment it bhulegla it is not social justice empowerment it is Ministry of Education it bhulegla this is wrong Ministry of rather Ministry of Education hela Ministry of Education ठीक अछि second रे to screen school children with respect to 20 years hela 20 types it bhulegla 20 not 21 types basically disabilities under RPD PWD Act 2000 physical handicapped hela cheta dekha 2016 aims at yearly screening and intervention hela and identified children to social it correct hegla this is correct or wrong again it is its integration with UDIC is an pending it is bhulegla pending no it is already integrated with the UDI hela already integrated so answer is jodi dekho only 3 is correct so co statement correct only 1 so answer is your A 42 consider the following 50 टा पर मु पुनी सार मान डाकुची consider the following match with respect to आपकी पूंजी आपकी अधिकार जब देखियो कैंपेन रिक्लेम द अनक्लेम्ड एसेट्स बैंक नंबर देखियो बैंक डिपॉजिट उद्गम पोर्टल दिस इज करेक्ट सेकंड कंसर्न योर इंश्योरेंस प्रोसीड्स बीमा किरियन पोर्टल एटी भूल हेगला एक्चुअली बीमा किरियन पोर्टल इज ए तंग देखियो इट्स एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट बीमा किरियन पोर्टल यदि एक्चुअली देखियो बीमा भरोसा यदि देखियो बीमा किरियन एटी नो इंश्योरेंस प्रोसीड हो कोन एटी भूल हेगला इट इज बीमा भरोसा ठीक अछि प्लीज मेक ए नोट बीमा भरोसा हैला एटा सो थर्ड रे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मित्रा पोर्टल बिल्कुल नो एटी सेबी रेगुलेशन ने आसी सेबी रेगुलेशन मित्रा पोर्टल ले आसुनी सेबी अंडर द सेबी रेगुलेशन ठीक अछि सेबी रेगुलेशन रे आसुची प्लीज मेक अ नोट सेबी रेगुलेशन फोर्थ विल डिविडेंड्स एंड शेयर सेबी पोर्टल एतरे आसुची सेबी पोर्टल नो एटी IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शनल फंड हैला प्रोटेक्शन फंड एटा आसी कोटा IEPF हैला IEPF हैला इन्वेस्टर मोर तो लिखि दउची इन्वेस्टर ठीक अछि इन्वेस्टर एजुकेशन पोर्टल ठीक अछि एंड प्रोटेक्शन फंड सो एटी कोन होइगला तीनटा ओनली वन केतरा स्टेटमेंट मैच होचे अबव ओनली वन आंसर इज A is the correct answer 43 बायोस्फीयर रिजर्व आउटी पन्ना केबे हेतला पन्ना हेतला 2011 पन्ना हेतला 2011 ठीक अछि देन नंदा देवी हेतला केबे 1988 रे 1988 मसिया रे हला नंदा देवी हेतला देन अगस्त मलाई तमिलनाडु रे हेतला 2001 रे
2001 रे एंड कोल्ड डेजर्ट दिस हैला 2009 रे सो जदी हमें देखिबा सो आंसर ए रे ताले किया आसी A 2 B 1 C 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 आंसर इज योर D for Delhi right answer is D for Delhi ठीक है जी 44 number question which refers to the pipeline transportation of oil consider the following statements ठीक है जी आ चार पांचटा क्वेश्चन पर मैं सारे को 50 पर हैंड ओवर करबी हला बाकी दी जण सार भी देखबे इन रीजन्स ऑफ सच एज Europe, Russia, West Asia, India pipelines are widely used to transport crude oil from oil to refinery. Absolutely correct. Secondary, pipeline networks are generally absent in Central Asian countries to difficult terrain and politician. एटी भूल गला जनरली absent एटी मेन तो अरे का जदी हमें देखिबा मेन जबर कोठी अछि काजाखस्तान पाइपलाइन काजाखस्तान तुर्कमेनिस्तान हला तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान एटी तो हमर पाइपलाइन absent कोठी हला रे एटी भूल दे देला Turkmenistan has developed pipeline connectivity extending Iran and parts of China. This is correct. माने देखो कितने चालाक तुम तो तुर्कमेनिस्तान जानी थी वो आराम से तुम जान दो कि ये क्वेश्चन टा भूल होची बोली सेंटर है ना सो इट इज ऑल अबाउट माने रेगुलर क्वेश्चन जो माने पेपर पढ़ा सब करंट ऊपर सब जिंस पकोचंती मैक्सिमम सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे 1 and 3 are correct b for bombay 45 with reference to the World Trade Organization consider the following statements World Trade its headquarters is at Geneva Switzerland absolutely correct As of December 2024, it has 166 member countries. Absolutely correct. बिल्कुल वर्तमान किए हेले इट मु लिखि दोछि तमर जानिया पे कोमोरोस कंट्री जोटा हला केते 165th कंट्री देन टाइमोर लेसेतो हला टाइमोर योर टाइमोर लेस्टे इट हला केते 166 कोमोरोस और टाइमोर लेस्टे these are the tiniest countries in near to the Africa हला कमरो जाऊ एटा टाइमर लिस्ट तो एटा टोटल केते हला 1 थिला केते तमर टोटल 164 टा प्लस 2 हला मैं आउथर रीड करछि 164 प्लस 2 मिसी केते हला 166 सो दिस इज करेक्ट थर्ड रे इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर सिंस द ऑर्गेनाइजेशन हला बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर तो सिंस द ऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्युटली करेक्ट इंडिया बिल्कुल अछि 1995 मसर फॉर एक्सप्लेनेशन 1995 मसर इंडिया अछि then it was established in 1945 80 भूल है 1945 नो हला it was in केबे established in लेकिन ये 1st January 1995 WTO हितला 1995 in माराकास एग्रीमेंट हला माराकास एग्रीमेंट रे हितला ठीक अछि माराकास एग्रीमेंट रे so 84 भूल गलत है so 1 2 3 is correct so B for Bombay is the correct answer B for Bombay is the correct answer 46 बिल्कुल हला जो भी स्टूडेंट रेट देछि मैक्सिमम करेक्ट तंकर अछि हला ए जहां भी रेफरेंस देछि बहुत सारा करेक्ट अछि डेफिनेटली माराकाइबो वेनेजुएला इट इज टू ऑयल पोर्ट देन योर रोटरडम यूरोप दिस इज एंटर पोर्ट टू वन कोची इज बेसिकली नावल पोर्ट हमें जानि चंती हला आईएनएस विक्रमादित्य बोले हां आईएनएस विक्रमादित्य हमर रामचंद्र सर जो 50 रैंक रखछन से भी बेसिकली नावल ऑफिसर and he was माने कॉन्फिडेंट तांगर कोची रे भी से आईएनएस विक्रमादित्य रे निजे काम करथले से हला मु सार को डाकु जाउटे परे देन 4214 yemen eden and it is 3 हला it is your ports of call so answer is 2143 it is D for Delhi हला D for Delhi 47 जदि देखिबा which are the following statements about education policy and learning outcomes India and Odisha NEP 2020 this is correct commented the home languages of other tongue as medium of instruction until at the least grade 5 download so this is correct Odisha most school abhiyan this is correct hela 2020 is in mobilizing alumni funds and infrastructure but studies weak correlation infrastructure this is also correct third B ASAT 2023 Odisha shows the while enrollment this is correct Odisha Shiksha Sahit Yojana this is also correct so all are correct D for Delhi answer hela kon D for Delhi 47 48 देखिए who said Arab invasion of Sindh is a triumph without results हला describe the 8 जो देखिए it is Stanley Lane Poll B for Bombay हला it is he described in the 8th century conquest of your Sindh हला sir जल्दी देखिए कि मोहम्मद बिन पश्चिम ऊपर है ठीक है चीज then 49 who confess the defeats of many villains and Vatis will not destroy them. I can ruin resource and land, but I can dry up the sea. Again, है द एगुड़ा सब नुआ नुआ क्वेश्चन हो रहे अछि बट
जोटा कि तमे छाड़ दवा बेटर बट इट डजंट मीन टिके जदी तमे की नोवेल के एगुडा पढु तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट 50 द महलवाड़ी सिस्टम इन ओडिशा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट बेसिकली संबलपुर हैला महलवाड़ी सिस्टम जो से समय थिला संबलपुर सेंट्रल प्रोविंसेस रा एडमिनिस्ट्रेशन संगे एनेक्स थिला मन रखो सेंट्रल प्रोविंसेस संगे संबलपुर वाज एनेक्स इज द मु लिखली कोन संबलपुर वाज एनेक्स्ड ठीक अछि वाज एनेक्स्ड विथ annexed with जदि देखिबो एडमिनिस्ट्रेशन संबलपुर एडमिनिस्ट्रेशन वाज annexed with your central province हला सेंट्रल प्रोविंस संगे थिला ठीक अछि सो दैट इज व्हाई संबलपुर ठीक अछि मु एतिकी 50 पॉइंट करे तापर अगेन सत्यजित सर को डाकुची जे वर्तमान अछंती सिटी जीएसटी राउरकेला रे तमरो ओएफएस वाज बेसिकली ओएफएस ऑफ ओसीएस 20 बैच 2020 रा सर को डाकुची सर नेला पर पुनी राम सर कंटिन्यू हला फाइनल ओके ठीक अछि सर नियत Thank you, Ashutosh sir, for inviting me this discussion class. So from now I am okay. So let's start our discussion. Thank you, Ashutosh sir. So the question number 51. Question number 51 is the opening of college in Cuttack took place in which year? तो कटक कॉलेज जोटा माने आगुरु थिला वर्तमान सेटा रेवेन्सा कॉलेज बोली ता ना ही जे सेटा 1868 रे सेटा स्टार्ट हितिला आउ इट प्लेड a significant role in the spread of modern education in Odisha renaissance ओके माने ओडिसा रो बहुत सारा माने ओडिसा रो बहुत सारा तो माने जानिथिबो बहुत महापुरुष माने सब ए रेवेन्सा कॉलेज एटू पास करथिले जोटा कि हमर 1868 रे सेटा हमर हेतिला ओके ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो एटार हमर आंसर हला 1868 नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 ने हमर देछि जे the court are prohibited to inquire to the advice given by the minister to the governor ठीक है तो एई जो स्टेटमेंट हमर कोन अछि ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट देछि जे द मिनिस्टर हैव नो लीगल रिस्पांसिबिलिटीज as per the constitutional provision तो एटी जो हमर ऑप्शन उडा भितरु हमर एटा हो सेकंड ऑप्शन टा जोटा हमर एटा एटी कोन हेछि दीटा को स्टेटमेंट ठीक अछि ठीक है द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर टू द advice given by the minister to the governor and the second statement bhi ठीक अछि the ministers have no legal responsibility as per the constitutional provision तो एठी कोन हेछि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक अछि कि सेकंड स्टेटमेंट ता करेक्ट एक्सप्लेनेशन नुहे हमर जोटा फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेति में हमर जो ऑप्शन हबो ऑप्शन बी हो ठीक अछि एटा हबो हमर बी तो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हला 53 consider the following statement regarding aquatic organism तो एटी हमर जो स्टेटमेंट देइछि तीनटा फर्स्ट स्टेटमेंट हमर देइछि जे प्लैंक्टन्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट इन वाटर ठीक अछि ए स्टेटमेंट ठीक अछि हमर एटार नेक्स्ट हैला प्लैंक्टन माने हम जानिछथि माने पानी रो ऊपर जो लेयर थाए सेठी से माने फ्लोट करथान सेकंड स्टेटमेंट देइछे नेक्टन इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट एक्टिवली स्विम इन वाटर तो एई जो स्टेटमेंट है एटा भी हमर ठीक अछि जनरली हम माने जानिथिबा जो सब फिश हैला माछो माछो कोन होय ना पानी रो भीतर ऊपर सब आडे से पहरी पारे तो सेमान को नेक्टन बोली कुआ जाय वेल माछो सेमान को भी कोन हुए कुआ जाय सेमान को भी कुआ जाय नेक्टन बोली ओके तापर जो किंतु 3 नंबर जो स्टेटमेंट देइछे हमर बेंथोस आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव सस्पेंड इन द वाटर कॉलम एटा किंतु स्टेटमेंट भूल हेला बेंथोस माने कोन होती जो समुद्र रो किबा वाटर बॉडी रो तळ लेयर थाए जो तळ सरफेस थाए सेइटरे से माने कोन करते चल प्रचल करते तो सेइथि में एई जो स्टेटमेंट एइटा कोन हेला ना भूल हेला ठीक अछि आउ हमर ताले आंसर कोन हो 1 एंड 2 एटा आंसर हिजबो ए ठीक अछि
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर हला 54 54 रो कोन देछि विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स कंसीडर चारटा स्टेट इटी हमर देछि स्टेटमेंट पांचटा स्टेटमेंट देछि ठीक अछि पांचटा स्टेटमेंट रो हमर इटी फर्स्ट स्टेटमेंट देछि साइक्लोन्स फॉर्म व्हेन सी टेम्परेचर एक्सीड -27 डिग्री ठीक अछि एटा हमर स्टेटमेंट ठीक अछि ठीक अछि 54 रो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट अछि हाई प्रेशर जोन इनिशिएट साइक्लोन्स तो এটা সেকেন্ড স্টেটমেন্ট भी সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আমার কোন কিছু ভুল হই ঠিক আছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আমার ভুল ଅଛି হাই প্রেশর জোন ইনিশিয়েট সাইক্লোন দেই দিছে এটা লো প্রেশর জোন হবো হলা তারপরে এটা আমার হবো লো প্রেশর তো থার্ড क्वेश्चन जो हमरो देइछि थर्ड विंड स्पाइरल्स इनवर्ड टुवर्ड्स लो प्रेशर सेंटर तो एई जो 3 नंबर स्टेटमेंट 3 नंबर स्टेटमेंट हमरो भी ठीक अछि ହେଲା 4 नंबर देइछि साइक्लोन मूव टुवर्ड्स रीजन ऑफ हाई प्रेशर एई जो 4 नंबर स्टेटमेंट कोन हबो हमरो 4 नंबर स्टेटमेंट हमरो भूल अछि 5 नंबर स्टेटमेंट कोन देइछि साइक्लोन्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ओशियन हीट एटा भी ठीक अछि ओके ताले हमरो आंसर कोन हला 1 3 5 ए आंसर हबो ए नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो आसला 55 55 रो क्वेश्चन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट COP13 COP13 को नै के क्वेश्चन हमरो देछि हला तो यार हमरो आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट देछि जे द बेलेम पैकेज फोकसेस प्राइमरीली on setting new binding emission target ठीक अछि तो एटा हमरो फर्स्ट स्टेटमेंट कोन हला भूल हे गला ठीक अछि इट फोकसेस ऑन द submission of new countries new nations okay तापर हमरो सेकंड स्टेटमेंट देछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमरो एठी कोन हला मु मार दोछि एठी 5 नंबर फर्स्ट भूल हे द ग्लोबल सेकंड स्टेटमेंट देछि द ग्लोबल म्यूटेराई एग्रीमेंट प्रायोरिटीज इंप्लीमेंटेशन ओवर एम्बिशन ठीक अछि तो सेकंड स्टेटमेंट हमरो एठी कोन हला ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि थर्ड स्टेटमेंट भी देछि द जस्ट ट्रांजिशन मेकानिज्म इंक्लूड्स लीगली गारंटेड फाइनेंशियल कमिटमेंट एटा भी स्टेटमेंट ठीक अछि 4 नंबर देछि द ग्लोबल implementation tracker is intended to access alignment with the 1.5 degree centigrade pathway तो यही जो 4 नंबर स्टेटमेंट भी ठीक अछि तो हमरो आंसर 2 3 4 तो आंसर एटा रो हमरो हला सी खाली प्रथम स्टेटमेंट भूल अछि बाकी उडा ठीक अछि तो आंसर हमर हला सी ठीक अछि तो 56 रो हमर क्वेश्चन जेछि द इंडिया इंटीग्रेट्स बायोडायवर्सिटी फाइनेंस विथ डेवलपमेंट प्लानिंग को नै कि हमरो देछि इटी चारटा स्टेटमेंट देछि द क्वेश्चन द बेस्ट दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ठीक अछि तो इटी कोन बेस्ट रिफ्लेक्ट हमको करूछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर देछि ग्रीन वाशिंग माने से जो क्वेश्चन देछि द इंटीग्रेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग तो ये से कहे कहा ये चार्टा जो ऑप्शन देछि कोनटा सबटर बेस्ट रिप्रेजेंट करछि फर्स्ट हमर होछि ग्रीन वाशिंग देछि ठीक है सेकंड देछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर देछि कमांड इकोनॉमी तापर देछि हमर फिस्कल फेडरलिज्म ओके तो हमर एटी आंसर होछि बी 56 हमर हला बी तो कोन पय म देछि हम कहि दोछि हमर 56 हला सस्टेनेबल डेवलपमेंट काई के हमर तो यार माने मेनली हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे कोन होछि इकोनॉमिक ग्रोथ ओके मैं लिखि दोछि इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक अछि इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोशल वेलफेयर आउट हला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ठीक है ये सब जिनस आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17टा गोल रही से भितर एगुड़ा सब रोचे
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ସଷ୍ଟେନେबल डेवलपमेंट ପାରାଡିଜମ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଷ୍ଟେନେबल डेवलपमेंट ଗୋଲ ଭିତରେ ଆସୁଛି। यार आंसर ହେଲା बी। ठीक ଅଛି, 56 नंबर सरला। नेक्स्ट हमरो खोदिया 57। ओके, तो 57 नंबर क्वेश्चन देछि, व्हिच ऑफ द टू आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन override fundamental rights in respect of article 14 right to equality, हम जानते हैं आर्टिकल 14 वाला right to equality and state level economic redistribution। तो ये हमरो आंसर जो देछि चारटा ऑप्शन, सेठी हमरो फास्ट हमरो आंसर हो बी। काहेकि ना आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 बी कौन करछि, हम फास्ट आर्टिकल 31 सी जो रहिला प्रोटेक्ट्स लॉ एनएक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेंट, जो हमरो आर्टिकल 31 सी रहिला हला। तो सेठी हमर कोन रहउछि, ता भितरे हमर एठी कोन रहउछि, आर्टिकल 39 बी और 39 सी ये ताकू डिराइव करछि। आर्टिकल 39 बी और 39 सी टा डायरेक्टली रिलेट होछ हमर आर्टिकल 31 सी सहित। ठीक अछि, तो हमर हमर आंसर होछि 57 न बी। हमर हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हमर देछि 58। ठीक अछि, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपल। ठीक है, एटा कोठो पचाछि जे को आर्टिकल एटा आछि जो डॉक्ट्रिन टा, तो यार आंसर हमर हला डी। ठीक अछि, माने जति की सब एडी देछि कोनोसी आर्टिकल आसुनी, ताले से आसुची कोठो हम कहबा the doctrine of estoppel is a principle of evidence and equality primarily contained in the Indian Evidence Act, जोटा वर्तमान हमर कोन हे जे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे जे आगुरु थिला सेटा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक अछि, इंडियन एविडेंस एक्ट 2024 रे एटा चेंज हेछि। ठीक अछि, एबे ता ना हेछि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 2024 रे सब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एगुडा सब चेंज हेइतला। तो हमर यार आंसर कोन होबो, एटा कोडो आसला ताले इंडियन एविडेंस एक्ट, एटा कोनोसे आर्टिकल आसीनी, सेत में यार आंसर हला नॉन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसी कोठी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, आंसर कोन हला ताले हमर डी 58 रो। तो नेक्स्ट हमर हला हमर कोन आसला, नेक्स्ट हमर आसला 59। ओके, तो 59 हम जो देछि अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप द नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वाज चेंज टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। माने आगुरु कोन करवा कुआ होतला, एबे जोटा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोली अछि तार माने आगुरु तार ना कोन थिला प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बोली कुआ होतला। तले से कहउछि जे कहा समय रे या नाटा चेंज हिच, तो आंसर हमर हला मोरारजी देसाई। ठीक अछि, अटल बिहारी वाजपेयी तो रिसेंट माने 2019 ରୁ 2004-5 पर्यंत थिले। ठीक अछि, किंतु मोरारजी देसाई ता पूर्वरु थिले, तो आंसर हमर एटा हला बी। ठीक अछि, तो या विषय मु टिके खाली कहि दोछि 1977 जनरल इलेक्शन परे, 1977 जो जनरल इलेक्शन हेतिला ता परे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई रिनेम द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट as the प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम। ठीक अछि, तो माने 1977 मसिया परे मोरारजी देसाई कोन कले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो थिला माने प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को ता रिनेम करथिले कोन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोली। तो आंसर हमर हला बी। नेक्स्ट असला हमर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नंबर रो। हाँ 60 नंबर हमर बोते जियोग्राफी ऊपर क्वेश्चन देइचे, consider the following with respect to pygmy hawk porcula salvanium। ओके, से कहिछि जे ता रिलेटेड केतरा स्टेटमेंट ठीक देइछि, माने जो पिग्मी हॉक रिलेटेड चारटा स्टेटमेंट देइछि, तो कोउटा कोउटा ठीक अछि बोली से कहिछि। तो एटी
ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ପିଗ୍ମି ହକ୍ କଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ରେୟାର ସ୍ପେସିଷ୍ଟ ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ପିଗ୍ ହେଲା। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଆରେ ଘୁଷୁରୀ କହୁଛୁ ହେଲା, ପିଗ୍, ବଣୁଆ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପିଗ୍ମି ହକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଇଛି କଣ, ଇଟ୍ ଇନହାବିଟ୍ସ ଇନ ଦ ଟଲ୍ ଡେନ୍ସ It inhabits in the tall, dense, wet alluvial grassland of Himalayan southern foothill. ମାନେ ହିମାଳୟର ସାଉଦର୍ନ ଫୁଟହିଲ୍ ରେ ମିଳେ। ଯେମିତି ଆମର ଆସାମର ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା। ମାନସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆସାମ ହେଲା, ଆସାମରେ ଆମର ଅଛି, ସେଇଠି ମିଳେ, ମାନେ ହିମାଳୟର ଫୁଟହିଲ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଅ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ IUCN ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ IUCN ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ରେ ବି ଆସୁଛି। 4 ନମ୍ବର, ଦେୟାର କନଜରଭେସନ ୱାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଜେରାଲ୍ଡ ଡୁରେଲ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କନଜରଭେସନ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଜେରାଲ୍ଡ ଡୁରେଲ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜରଭେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ, ଡୁରେଲ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜରଭେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରୁ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଗ୍ମି ହକ୍ ମାନଙ୍କର କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ହେଲା, ଏଟା ବି ଠିକ, ଏଟା ବି ଠିକ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏଟାରେ ଅଲ୍ 4 ଡି। ତ ସବୁଗୁଡା ଠିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆମର ଆସିଲା 61। 61 ଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡା ବହୁତ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଆସିଛି, ଟ୍ରିକି ଆସିଛି, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢିକି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯେତିକିଟା ବି ଆନ୍ସର ମାନେ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ହାଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ହେଇନି କଟ ଅଫ୍ କମ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ଲେନ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଆସିଲା 61। 61 ଦେଇଛି ଯେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ अबाउट ଦ ପେମ୍ବା ଇଫେକ୍ଟ। ତ ପେମ୍ବା ଇଫେକ୍ଟ ଟା କଣ, ପେମ୍ବା ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଏଠି 4ଟା 5ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ତ 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା କାହିଁକି ଭୁଲ ଅଛି, ବାକି ସବୁଗୁଡା ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ସରି କୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ଠିକ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ନାଇଜେରିଆ ଦେଇ ଦେଇଛି, ନାଇଜେରିଆନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କଣ ହବ, ତାଞ୍ଜାନିଆ। ଓକେ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାଞ୍ଜାନିଆ ହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା 1 2 3 4 ଆଉ 5 ନମ୍ବର 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହବ ଡି। ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା यार ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, नो नेक्स्ट क्वेश्चन 62। Presently, a 9 judges bench of the Supreme Court is hearing the Sabrimala reference. ସାବରିମାଲା ଟା ଯଦିଓ ଏଇଟା କିଛି ରିସେଣ୍ଟ ଇଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ସାବରିମାଲା ରିଲେଟେଡ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଥାଏ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ। ତ ସାବରିମାଲା କୁ ନେଇକି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆମର ଆସିଛି, ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ସେ 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଟ ଇଜ ଆଜ पर द आर्टिकल 145(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ବି ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ 145(3) ଟା କଣ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ ଭର୍ସେस ରିଲିଜିୟନ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ତା ରିଲେଟେଡ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଟା। नेक्स्ट ଦେଇଛି केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। नेक्स्ट ଆମର ଦେଇଛି इंदिरा सानी, नेक्स्ट ଆମର ଦେଇଛି इंदिरा सानवी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक ଅଛି, तो ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା।
4 नंबर स्टेटमेंट देछि एसआर बोमाई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ए जो स्टेटमेंट भी ठीक अछि, तो यार आंसर भी होबो डी। ठीक अछि, तो सब स्टेटमेंट गुडा यार ठीक अछि। हमर एटा करला केते 62। ओके, तो नेक्स्ट हमर आसिला 63। Which of the following statement about the children's Booker Prize is not correct? पूरा not correct देछि। ओके, तो बहुत पिला करेक्ट मारती के आसबो कि एटी दे दिछे not correct हला। तो मो मते जेतल तुम माने एग्जाम अटेंड करूछ प्रिलिमिनरी जदी कोनोसी क्वेश्चन आगे नॉट देखिलो तो ता तळे आगे पेंसिल रे सेठी तो थिबो ना पेंसिल आगे अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट जेतल तुम सेंटेंस टा पढिबो सेतल तुम माइंड रे सबले नोट टा आसी हला। नहले तुम माने पढिथिबो क्वेश्चन ए नॉट किंतु स्टेटमेंट रे तुम माने कोन करथिबो ना भाबुथिबो जे नॉट लेखा हैनी बोली। सेहि मोर सजेशन जेतेबेले तुम माने एग्जाम एथरो देइछो कि नेक्स्ट रे आउथरो भी देबो सेतेबेले सबले पेंसिल आगे अंडरलाइन कर दो। ठीक अछि, तो क्वेश्चन हमर कोन देइछि जे एमानक भितर चिल्ड्रंस बुकर प्राइज सहित ए रिलेटेड क्वेश्चन माने सेंटेंस भितर कोउडा ठीक नाही। ठीक अछि, ता माने कोउडा ठीक अछि हमें देखिबा हैला। ठीक हमर अछि हाय जो स्टेटमेंट देइछि इट विल बी अवार्डेड एनुअली फ्रॉम 2027। हाँ ए स्टेटमेंट ठीक अछि। ओके, एटा हमर हला 63 ना। तो एटा कोन है तो चिल्ड्रन बुकर प्राइज इज शेड्यूल्ड टू बिगिन फ्रॉम 2027 माने एटा डिसाइड करा है जे एनुअली दिया हबो केबेटु दिया हबो 2027 मसिया रु दिया हबो। माने एई स्टेटमेंट ठीक अछि हला, किंतु हमकु कोटा ठीक अछि पचारनी हमकु पचाछि जे कोटा भूल अछि हला। तापरे नेक्स्ट स्टेटमेंट हमकु कोन देइछे इट विल बी अवार्डेड एनुअली फ्रॉम माने देखो आइदर एटा ठीक हेतिबो न एटा ठीक हेतिबो हला। तो आमे तो देखिदेले एटा ठीक ता माने एटा भूल हला। तापरे 3 नंबर स्टेटमेंट 3 नंबर टा कोन देइछे द फाउंडिंग पार्टनर एंड प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ इट इज द आको फाउंडेशन। ठीक अछि, अच्छा एटा से दे दिजे आको फाउंडेशन एटा 3 नंबर टा को फाउंडर एटा होची गोटे फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर स्टेटमेंट ठीक अछि हला, आको फाउंडेशन विषय से देइछि। 4 नंबर स्टेटमेंट हमर कोन हला काहे कि सेटा भूल हला द फाउंडिंग पार्टनर एंड प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ इट इज द टीवीएस फाउंडेशन। तो एटा जदी ठीक हला ऑटोमेटिकली एटा भूल हे जिवो। तो हमें चेष्टा करछु मैक्सिमम आंसर माने देखि कि माने तुमको देबा में प्रोवाइड करछु। ए भितर किछिटा एपट सट हेई पारे काइना ओपीएससी एतला क्वेश्चन फॉर्मेट माने फॉर्मेशन करिथिबो से को माने ये रे करिथिबो आमे एतला आंसर बाहर करछु मे भी गोटे दिटा एपट सट हेई पारे बट आमे चेष्टा करछु मोर देन 95% आमे माने एक्यूरेट देबा पय आंसर विभिन्न सोर्स रु आमे बही देखि कि आमे आंसर उडा करिछु। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस which of the following processes involves a decrease in entropy। ठीक है माने ठीक अछि, तो चारटा ऑप्शन देइछि कोन कोन बर्निंग ऑफ कोल इन एयर हला माने एंट्रोपी एतरा कोथरे कम होछि एंट्रोपी हला। एंट्रोपी बोधे समस्त जानि थिबो हां जो एंट्रोपी माने कोन रैंडमनेस जो एटम मानकर रैंडमनेस। तो कोन देइछि फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम H2 and N2 एक स्टेटमेंट ठीक अछि हला। इवापोरेशन ऑफ वाटर मेल्टिंग ऑफ आइस हला। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी कोथरे होछि हमरो ए जो सेकंड स्टेटमेंट रे होछि एटा हमर हला 64। तो एटा कोन होछि एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कन्वर्ट्स 4 गैस मॉलिक्यूल इनटू 2 गैस मॉलिक्यूल। हमर ए जो अमोनिया तयारी होछि ठीक है चारिटा मॉलिक्यूल रो कोन हे होछि दुईटा मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होछि। ठीक अछि, तो द सिस्टम बिकम्स मोर ऑर्डर सो एंट्रोपी डिक्रीज आमे जानिथबा माने केमिस्ट्री आमे पढिथबा
जदि सिस्टम टा मोर ऑर्डर माने ऑर्डरनेस जदि बढ़िला कोन ऑर्डरनेस जदि बढ़िला ताले कोन हबो रैंडमनेस कमिबो रैंडमनेस डिक्रीज करियो माने गोटे सिस्टम टा जदि मोर ऑर्डर माने तार अरेंजमेंट बढ़िया हबो धीरे धीरे से कोन हबो स्टेबल हबो ताले कोन हबो तार रैंडमनेस टा कमिबो हैला माने तार एंट्रोपी टा कमिबो हैला तो एटा हला से रिलेटेड क्वेश्चन टा तो आंसर टा कोन होछि हमर बी 64 बी तापर आसला 65 65 यार आंसर मु लिखि दउछि बी तो 65 टा हमर कॉलम मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन टा देइजे पेनिनसुलर प्लेट्यू हिल रेंज है ना with reference to the geographical evolution of the peninsular plateau of India ମାନେ geography question और तुम geology question कहि परियो match the following hill ranges है ना hill range विषय से कहिछि तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर देछि आरावली रेंज ता कोन हमें जानि छथि आरावली रेंज कोन आरावली रेंज होछि हमर ancient residual fold mountain कोन ancient residual fold mountain ancient residual fold mountain ताले कोटा हबो एटा ठीक अछि 1 हला सेकंड नंबर कोन देछि नालामलाई टा हमर कोन हबो स्ट्रक्चरल हिल ऑफ ईस्टर्न घाट हला ये भी ठीक अछि सेकंड ऑप्शन ईस्टर्न घाट रेंज रे हमर अछि तमिलनाडु रे अछि हला थर्ड ऑप्शन देछि जावादी एटा हला डाइसेक्टेड प्लेट्यू रेमिनेंट ये भी ठीक अछि हला पूरा सीधा को सीधा से दे दिछि तापरे महान महेंद्रगिरी हिल टा कोन हबो ताले नॉर्थ ईस्टर्न डिसकंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट ये भी ठीक अछि हला तो ताले सही अनुसार हमर को ऑप्शन हला 1 2 3 4 मन देखिया एठी कोन अछि 1 2 3 4 माने बी ऑप्शन टा हमर हला 1 2 3 4 ठीक अछि तापर हमर आछिला 60 कते गला 65 तापर हमर आछो 66 ହେଲା तो 66 हला डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ओके तो consider the following statement regarding the statutory definition of disaster of as providing under the disaster management act 2005 मसरे गोटे आस्थिला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ताकू नै कि से चारटा स्टेटमेंट देइछि तो से कहिछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अनुसार डिजास्टर माने कोन हला ताले हमर 6 एटा हला 66 क्वेश्चन नै कि तो आंसर होची 1 3 एंड 4 1 3 एंड 4 हला तो फर्स्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट एठी हमर कोन अछि ठीक अछि द एक्ट कवर्स नेचुरल एंड मैन मेड इवेंट्स हला माने हमर डिजास्टर रे नेचुरल भी हेई पारे मैन मेड भी हेई पारे जब एठी लिखा है नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस ता माने एटा नेचुरल हेई पारे और मैन मेड हेई पारे सेकंड स्टेटमेंट लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ इज नॉट मैंडेटरी फॉर एन इवेंट टू क्वालिफाई एज ए डिजास्टर डिजास्टर माने एठी कोन देई दिछि एटा काहे कि मु भूल बोली कहली देखो डिजास्टर हेले जे सब बेले लोक माने ह्यूमन मानकर मरिबे लोक मरिबे बोली सेमति किछि न थाए मानकर कोडी जंगल हला कि कोनोसी जगह रे हमर पोलर एरिया रे हला तो सेमति हेले लोक सेठी सेमति नथिबे तो सब बेले जे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सेमति किछि माने नै तो सेहित में एटा भूल अछि थर्ड स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट हमर कोन अछि damage exceeding the coping capacity of the affected community is the key criteria माने जो हमर ए जो स्टेटमेंट देइछि हमर 4 नंबर स्टेटमेंट ता ठीक अछि हला it is characterized by an occurrence of such nature or magnitude that it exceeds the coping capacity of the affected community ठीक अछि से ठीक हला तो आंसर हला कोन 1 3 4 बी आंसर ठीक हला तो आंसर हमर एटा हिला बी ठीक अछि 67 67 number देइछि with reference to the oil seed in India consider the following
तो ऑयल सीड माने एटा मो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन एग्रीकल्चर जो अछि से चैप्टर आछि। तो आंसर हमर होला तीनटा स्टेटमेंट एठी हमर ठीक अछि हला। तो को तीनटा ठीक अछि फर्स्ट सेकंड फोर्थ फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट चारटा स्टेटमेंट हमर ठीक अछि। बाकी 3 नंबर स्टेटमेंट एटी भूल अछि सेटी 1/3 देछि ऑयल सीड ऑक्युपाई अबाउट 1/3 ग्राउंड 1/3 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया बोली देछि 1/3 नुहे ऑयल सीड जदी 1/3 हो तले हमर बाकी जो स्टेपल फूड अछि ताले से तो ताले कोन हो ताले सेते ऑयल सीड मात्र हमर 12 रु 15% ठीक अछि 12 रु 15% होछि हमर ऑयल सीड। तो सेहिति में स्टेटमेंट हमर कोन हेला भूल हेगला बाकी उडा सब ठीक अछि। तो आंसर हमर एटार कोन हबो तीनटा माने ओनली 3 आंसर हबो सी 68 68 is which one of the following correctly describe the geographical behavior of Bahuda, Bansadhara and Nagavali rivers ठीक अछि। तो 68 हमर होछि को स्टेटमेंट से कहिजे ठीक अछि बोली। तो एठी बाकी उडा कोन होछि हमर एठी स्टेटमेंट सी द ओरिजिनेट इन ओडिशा एंड फ्लो इनटू आंध्र प्रदेश माने ए जो नदी गुडा कथा कहला माने ओडिशा रे कोन हेचंती ओरिजिनेट हेचंती आ फ्लो हेचंती आंध्र प्रदेश बिफोर जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल एटा सी हला। बाकी स्टेटमेंट गुडा तो भूल अछि काना एटा तो जनरल माने हमर नदी गुडा कथा कहिछि जे कोठी एमानकर बिहेवियर ज्योग्राफिकल बिहेवियर कथा ओके। तापर आसला 69 हमर होछि पचाछि with reference to the power sector in Odisha the Odisha Power Generation Corporation OPGC हला एटा जानिथिबो कि नाही या फुल फॉर्म ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ताको ओपीजीसी बोली कुआ होछि play significant role in thermal power generation in the state in this context OPGC was incorporated माने केबे हेइथिला बोली से पचाछि। तो केबे हेइथिला 14th नवंबर 1984 तो फैक्चुअल क्वेश्चन हला। एई भला क्वेश्चन गोटे गोटे दे देछि जोटा कि मुझे बनतला जे स्टूडेंट मानन को बहुत माने प्रॉब्लम रे पकुथो काना एमती ऑर्गेनाइजेशन मानकर केबे हेइथिलाटा मने रखियाटा बहुत गोटे डिफिकल्ट काम हला। बट ओपीएससी पकोछि तो हमकु भी नेक्स्ट एग्जाम बेलक भी किछि किछि एइबला ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट ओडिसा रो ऑर्गेनाइजेशन जेमते ओएमसी हला ओपीजीसी हला ओपीटीसी हला एइ मानक के माने केबे इनकॉर्पोरेट हेइथिला एटलीस्ट जानिथवा दरकार हला। काना ओडिसा ओपीएससी एग्जाम करछि से जेमति चाहेबो सेमति क्वेश्चन भी पकई परियो आमे किछि कर परियो हला। तो तापरे आसिला से लास्ट क्वेश्चन माने मोर लास्ट क्वेश्चन तापरे हमर नेक्स्ट आर आसी डिस्कशन करिवे। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड इन इंडिया हमर जो डेमोग्राफिक ट्रेंड केमिति थिला आउ वर्तमान केमिति अछि और एमति कहि परिया कि बिटवीन 1971 रु 2021 इंडिया टॉप फर्टिलिटी रेट कोन थिला हला। तापरे केमति से डिक्लाइन हला ड्यूरिंग द सेम पीरियड द प्रोपोर्शन of the population age 60 years and above increased from 5 to 10%. The working age population 15 to 59 years peaked around 2020 and is projected to begin decline after 2040. तो एबा ये लेंदी क्वेश्चन भी देइची हला जोटा को हमें तार आंसर कोन होबो 70 रो 70 रो हमर आंसर होची डी बाकी उडा सब भूल अछि हला। तो तो यार इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड पॉपुलेशन एजिंग व्हाइल स्टिल हैविंग ए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन जो डिस्ट हला। तो से हमहु कोन करछि बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट कोडा मोस्ट एक्यूरेट कथा से देछि। तो ए जो चारटा स्टेटमेंट भीतर सबुठारु मोस्ट एक्यूरेट होछि हमर डी ऑप्शन टा जोटा देछि द इंक्रीजिंग इन एल्डरली पॉपुलेशन मींस इंडिया विल फेस एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस even while the working age population is still large माने माने ठीक अछि स्टेटमेंट माने से कोछि वर्तमान हमर एजिंग बढ़ुछि माने हमर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ताको एज बढ़ुछि किंतु स्टिल वर्तमान भी माने
तो माने एबे भी सब देखितो यूथ माने माने वर्किंग एज जो माने कि अनएम्प्लॉयमेंट रहउचंती ए सब जिंस प्रॉब्लम सब चलची से माने एबे भी गोटे हमर मो टोटल पॉपुलेशन गोटे कोन लार्ज चंक होचे हमर ए वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन ठीक अछि तो आंसर हमर एटा हबो डी तो नेक्स्ट जो डिस्कशन हबो मु सार को राम सर को कहूची से आज की डिस्कशन कंटिन्यू करी So, thank you सत्यजीत सर. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ रामचंद्र नायक जी के तरह ओसीएस 20 रे सॉरी ओसीएस 24 रे 50 रैंक आछंती सर कर भी तम डिस्कशन में 71 क्वेश्चन टू सर करिवे एंड रिमेनिंग लास्ट रो कुछ क्वेश्चंस 4 5 क्वेश्चंस को नहीं सो के संग कर दो यस Yes. Thank you, sir. तो मु 71 रु 95 जाए कवर करके जाउची तापर रेस्ट सर देखबे. '71 question है regarding consider the following statements about targeting and leakage in poverty alleviation programs in India and Odisha. Aadhaar-based biometric systems authentication for PDS in Odisha has reduced duplicate ration cards, but studies show increased exclusion errors for elderly and tribal populations. So ये जो चार्टा statement अच्छी तो most of the statements are generic. So accordingly, the answer will be option D. Next, we have 72. Population distribution between rural and urban areas is best represented using which of the following graphical methods? So, unexpected question, but OPSC since uncertain, the answer is dots and spheres. Option is C. Next, 73. Okay, custom list 1, list 2. Monetarism, employment multiplier, multiplier effect of balanced budget, rational expectation, hypothesis. So जदि आमे देखिबा ताले monetarism टा आसी हमरो 4 संगे तापर employment multiplier आसी जो हमरो 1, C आसी जो 2 and D आसी जो 3. तो हिसाब रे हमरो ऑप्शन B is the right answer. Next है 74. Okay, ये हिस्ट्री आसी गला फिर तो इधरे सब गुडा के जनरली हमरो अच्छा रॉन्गली पचारची सो एटा जेमति कि हमको मार्क करिवार अछि आमे एकलाळे जानुचे जे जोटा कि हमरो जदी देला नॉट करेक्ट या फिर रॉन्गली तो सेटा फास्ट हाईलाइट करले ही हमें नेक्स्ट फर्दर जाय पारे नहले फिर सब तक लागियो हमको जो टिक मारियर अछि सब तक कर देबनी सो ए चारटा का जदी हम देखिबा चारटा का ऑप्शन तो सब तक ठीक ही रछि तो से हिसाब रे हमरो रॉन्गली हेगले नॉन ही आसी जो आंसर मुद्रा राक्षस हमरो जोथरे समुद्रगुप्त उनको विषय बा चंद्रगुप्त 2 तांको विषय डिस्क्राइब करा हैछि जो मालविका अग्निमित्रम अछि सेतरे कालिदास लिखिचंदी अग्निमित्र जो सुंग रूलर अछि तांको विषय तो मिलिंदपन भी कन्वर्सेशन हम जानि छे तो ए हिसाब रे हमर आंसर आछि जो डी नेक्स्ट देखिबा अगेन एक मैथ द कॉलम्स से हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच पचरछि तो एथ्रु केतरा पेयर मैच अछि तो एथ्रु हम एनिमेशन जानछे सिंस शी इज अ फॉरेन लेडी तो ये ऑप्शन ता ही हमरो क्रॉस इजो बाकी रे 3 आर मैचिंग सो हिसाब रे ऑप्शन हमरो ओनली 3 इजो सो सी नेक्स्ट है 76 अगेन आ गोटे मैच द फॉलोइंग आसी बहुत हम ये रे असलनी तो ये भी टिके बहुत माने फैक्चुअल हे गला जोटा कि हमको टिके करिया बहुत मुश्किल हे जो एनीवे तो मैं यार ये कहि दोची महादेवन तांकर सी आसी ऑप्शन सी एबीसी सी जोटा कि हमरो एक्सेप्ट द द्राविडियन हाइपोथेसिस एंड पब्लिश्ड एन इम्प्रेसिव कंप्यूटर
concordance. So हिसाब रे C, second आसी जो हमर E, third आसी जो D, 4 आसी जो A, and 5 आसी जो B. एथर को माने चारिटा को मैच द कॉलम रे मुश्किल हे जाय, एथर को पांचटा भी देछि तो आहुरी आज जानिबे मुश्किल हे जो. तो एनिवे ता आंसर आसी जो C. एटके एक्चुअल अछि तो मुश्किल हो, बट ता अनुसार हमको प्रिपेयर भी रहा पड़िया जे जब एमटी भी क्वेश्चन आसे जोटा कि आगु देखा गलानी आसुची बोली तो करिया भी पड़ियो. 77 ओके. ये तो करंट अफेयर रिसेंट जो हेतला कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कर्नी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डेवोस जो हेतला ता विषय देछि. तो दीटा के स्टेटमेंट रे कोटा करेक्ट और नॉन करेक्ट. स्टेटमेंट 1 देछि, स्टेटमेंट 2 द मिडल पावर्स मस्ट एक्ट टुगेदर. से कहतला हमर जो मिडल पावर्स विषय जोन की ठीक मिसी की काम करबो उचित बोली. सेकंड स्टेटमेंट यू आर नीदर एट द टेबल नॉर ऑन द मेन्यू. तो एटा तो पॉसिबल नो काहेना हमें ऑलरेडी चाइना और जतक सब कंट्रीज अच्छे ग्रोइंग कंट्रीज अच्छे हमें एमती नहीं जे खाली टेबल रे भी नहीं कि मेन्यू रे नहीं बोली. सो स्टेटमेंट 1 तक मेरा करेक्ट है जो, बट स्टेटमेंट 2 टा में कहबा से रॉन्ग बोली. सो इन दैट केस C will be the answer. Next 78 again factual question. बहुत पिला उज्जैन भी मार दिथे काहे ना सी वोड सेंटर पॉइंट बोली. हाउएवर द आंसर इज मथुरा. काहे से वोड मेन जंक्शन जोटा कि हमर जो गोल्डन से ट्रेड रूट टा जाय बोली होती है, ट्रेड रूट टा जो जाय सेटा को हमर मथुरा रे आसी. सी 78. नेक्स्ट हमर 79 ओके. रेफरेंस तो टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा. तो टेंपल आर्किटेक्चर रे हमरो दीची जो भी चारटा स्टेटमेंट दीची. तो बैद्यनाथ टेंपल नियर द सोनपुर सेटा होची टिके लॉफ्टी गेटवे. हम गेटवे विषय जानछे से टेंपल टा ना होची टेंपल टा सेटा में आउट जान अलगा टेंपल जो लॉफ्टी गेटवे अछि ताटी देखि दे मुटे भूली छौजी. से केवल की गोटी स्टेटमेंट ही टिके भूल रोची, बाकी सब ऑल थ्री करेक्ट. एसरा हमरो सी अछि ऑप्शन. तो नेक्स्ट देखिबा 80 with reference to Jai Rajguru. Consider the following statements. His full name is Jayaprakash Rajguru Mahapatra. जानिछे हमें. तापर से मुकुंदन देव 2 को टाइम रे भी थिले रॉयल प्रेसिपिटर. He mobilized an army by us. So is all four are correct. सब गुडा को ठीक है विषय. आंसर इज डी. नेक्स्ट देखिए हमें 81. Okay, literary source mentions Kalinga and Odra along with the sacred river Baitani and goddess. अच्छा कोट हमर सोर्स आछि ओडिसा विषय रे. तो ई जो दीटा का हमर कलिंगा ओड्र अछि दीटा को ओडिसा रो पुराना ना तो महाभारत सोर्स में आछि. आंसर सी 82. अच्छा नॉट करेक्ट. सेकंड हमें हाईलाइट कर दा नॉट करेक्ट. ते बचाची in respect of number of ministers in the council of ministers. तो ये जो चारटा स्टेटमेंट दीची ए भितर को दीटा हमरो माने को केतरा भूल के कोन बोली. तो ऑब्वियसली दीटा ऑप्शन रे दीटा के अछि माने कोटा हमरो भूल है दीटा को चूज करबा पड़ियो. सो 1 नाउ 4 ए भितर हमें जदी जानि पारे कोन कोन भूल अछि. बोथ द हाउसेस एड जो अछि बोथ द हाउसेस नो बल्कि गोटे माने केवल लोकसभा रो. सो ई गोटे फुल 4 ही भूल गेला. ए दीटा भूल जो तापर हमरो तापरे एक नंबर टा एक्सक्लूडिंग जो लिखा है. सो 1 4 भूल गेला त हम आसी ऑप्शन ए. 83 जीवा. ओके. ये स्लोगन की देते थे एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे. तो ये आंसर ये भी बहुत फैक्चुअल है गला. तो ये जाने मुश्किल एनवे देतले श्याम प्रसाद मुखर्जी जी. ऑप्शन हमरा डी. तापरे हां स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन विषय आसला. हाँ स्टेटमेंट दीजिए द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड.
ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛे ଯେ ଆब्सोल्यूट तो नुह बिल्कुल भी तापरे एक्सप्लेनेशन दीची द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल restrictions on certain rights in the interest of sovereignty security and public order एटा भी जानिछे स्टेट पाखरे से पावर अछि जे रीजनेबल restrictions लगे पारियो तो जदि हमें हिसाब रे देखिया तो स्टेटमेंट हमर करेक्ट हेगला सॉरी रॉन्ग हेगला तो एगुडी आसियो डी explanation is okay correct next देखो हमें 85 एटा डायरेक्टली आसी जुडिशियल रिव्यू कोटो आसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कोटो आसी हम जानि जेटा यार ऑप्शन वेरी इजी तो समस्त करि पाते कि चोस्ता 85 86 हेगला नेक्स्ट a data protection law restricts sharing of personal data but RTI activists argue it weakens transparency एटा मोस्ट प्रोबेबली जो और डाटा प्रोटेक्शन लॉ आस्थिला 2023 रे तार रिगार्डिंग और जो केस पुटुसामी केस 2017 आस्थिला तार रिगार्डिंग अछि तो ये हिसाब रे हम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू फंडामेंटल राइट्स ये दीटा का और फंडामेंटल राइट्स को कंट्राडिक्ट करछि सेटिंग आवर ऑप्शन ए डाटा प्रोटेक्शन भी करियर अछि और आरटीआई एक्टिविस्ट जो करछन से पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट क्या 87 again statement of explanation based question digital governance can enhance inclusion obviously digital governance like can reach so this is also a মানে generic statement तो can ହେଇପାରିବ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ explanation କଣ ଦେଇଛି it eliminates all forms of exclusion all ଦେଇଦେଲା the negative word so in that case ଆମର କଣ ହେଇଛି option C S is correct is incorrect 88 देखिए मतलब next consider the following statements regarding the departmental related parliamentary standing committee हमर जो parliament standing committee अछि ता विषय असला तो जी कितना स्टेटमेंट ट्रू तो हमें इधर देखिए देखिए पार्लियामेंट परमानेंट रेगुलर पैनल्स टू फ्रेम लेजिस्लेशंस तो ये तो हम स्टेटमेंट रॉन्ग they also examine the demand for grants for various departments during the budget process ये करछन पार्लियामेंट कमिटी हम जानछे एटा तापर होची देयर 22 actually this is also 24 standing committee और सातरा हमर जो ये कमिटी है तापर the estimate committee and public account committee are two most important among such committees but also finance committee रासन actually important committee but ये finance committee रासन सेथिंग हमर ऑप्शन ओनली ए है जो which is only one माने केवल ये टूटा next देखो 89 okay blue flag beaches in India विषय आछि okay blue flag certification is awarded to coastal sites that meet international standards it would generic statement it किछि माने wrong होवार चांस नै तो ठीक अछि okay certification दोउछि कि MOEFCC नो से फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन दोउछि डेनमार्क रो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन सो MOEFCC तो बिल्कुल भी नो एनाडा बाहर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन तापर इन इंडिया द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड अंडर द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम सो ये भी गुड जनरल स्टेटमेंट और इतरे किछि रंग होवार चांस ओके इंडिया हैज अचीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 18 एक्चुअली अचीव 12 टा सो कितना हेगला 1 2 स्टेटमेंट केते अछि ओनली 2 90 assertion और reason विषय असला increasing atmospheric CO2 reduces carbonate ion availability in seawater अच्छा atmospheric CO2 विषय से कोई माने dissolved CO2 विषय कोई जो हमारा ओशन ने की अलग है atmospheric CO2 विषय कोई ठीक अछि स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट अच्छा रीजन कौन देछि ना dissolved CO2 forms carbonic acid which releases hydrogen ions and bind with carbonate ions जो CO2 dissolved है कि था ओशन रे सी जे कार्बनिक एसिड रिलीज करे तापर तांकर माने हाइड्रोजन आयन और बाइंड होके कार्बोनेट आयन बने तो दीटा को जनरली ओके सो विल गो फॉर ऑप्शन ए जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड थाए ओशन रे से रिलीज करा परे कार्बनिक एसिड हमरो कार्बोनेट आयन फॉर्म हुए सी वाटर 90 वाला 91 नेक्स्ट HPV vaccination drives launched by the Prime Minister in February 2024. This is also current news. HPV vaccination आस्तेला. So statement 1, 2, 3, 4. चारिटा को ओके अछि हमर ऑप्शन देछि इनकरेक्ट विषय रे. So हमें फर्स्ट टाकू कर देला परे और सब ऑल ऑप्शंस आसे दियो. तो अब इनकरेक्ट कोन होता है? नो.
ऑप्शन डी देन एटा बेसिकली जो सर्विकल कैंसर अछि तारी रिलेटेड येटा न्यूज जो वैक्सीनेशन ता तो एज भी 14 इयर्स एंड जो एज ग्रुप अछंती जेतक सब माने गर्ल्स समान पे की आसला तो इस हिसाब रे चारटा का हमरो ऑल करेक्ट तो सेथमी का हमरो इनकरेक्ट पचारछि माने नॉन आसीयो नेक्स्ट आसीबो 92 अच्छा ये भी गोटे नुआ अचानक क्वेश्चन आसिला हिंदू मुहूर्त इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 48 मिनिट्स ड्यूरेशन ये भी स्टेटमेंट ठीक जो मान टिके कैलेंडर पे जानुथिबे से माने टी भल रे आंसर दे परिबे ईच मुहूर्त इज डिवाइडेड इनटू 30 कला कालो सॉरी नक्षत्र इज द सन सिस्टम दिस इज नॉट सन दिस इज मून छोटो छोटो हमर जो भी नाउन्स थाए जोड़ा को मैनिपुलेट करी हबो सेठी सब यूपीएससी और ओपीएससी खेल खेलंती एटू मैनिपुलेट किन करि परिबो करण इज हाफ ऑफ तिथि सो दिस इज आल्सो राइट तो हमें हमारा ऑप्शन हिसाब रे 3 केवल गोटे को भूल नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 ओके एथर को बहुत माने ओनली 1 2 3 पेयर बेस्ड क्वेश्चन आसी आइतला जोटा कि ओपीएससी एक्सटेंसिवली फॉलो करछि यूपीएससी को 2023 रो सर जो आतला सेही तार हिसाब रे originally the constitution provided for the CJI and 7 judges this is also this is a factual question that generally पिला पढନ୍ତି स्टार्टिंग बट मन रहे न सेटा मैटर करे से टाइम रे तापर सुप्रीम कोर्ट एम सब वाला परे जतले 1956 एक्ट रे फेर आउथरे जजेस पढाइले 10 एक्सक्लूडिंग सीजीआई इट वोडे फेर गेम खेली दे पार जदी 11 लिखि कि 10 लिखि तो ये भी वोडे करेक्ट स्टेटमेंट so the act has been amended 5 times not 5 times 7 times हेकरी एबे जो रिसेंटली हमरा अमेंड हेकरी 38 जजेस को बढ़ी छंती the maximum increase in strength of judges was by the amendment of 2008 तो सिंस एटा तो माने क्लियरली देखि जणा पड़ जाउची कांगना भी रिसेंटली अमेंडमेंट हेई बढ़ी तो एटा तो बिल्कुल भी होबन तो एदिटा होइला पर हमरा आंसर जासो बी 94 ए नॉट करेक्ट पचारची नाटो विषय रे नाटो सिंस एबे न्यूज रे चलीची तो नाटो तो टिके निहाती पड़ी कि जानिया दरकार तो हम पचारची कोन नॉट करेक्ट तो बाकी सब तो ठीक रहउची सी ता होची हमरा जोट के आंसर जेटा नॉट करेक्ट जोटा कि हमरो आज ऑफ मार्च 2024 नाटो हैज 34 मेंबर्स एटा होची हमरो 34 नो बल्कि 33 या 32 समथिंग एटा टिके देखि देबे एटा 34 तो नो 95 okay consider the following statements about passive euthanasia एतर को बहुत करंट रिलेटेड क्वेश्चन पके छी passive euthanasia जोटा कि वर्तमान न्यूज थिला तो द सुप्रीम कोर्ट नेवर अलाउड पासिव एटा तो केबे भी नो काना भी रिसेंटली से जो परिचंती ताको पासिव euthanasia दिया इस केस सेकंड नंबर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउड passive euthanasia under strict guidelines yes this is correct passive euthanasia was legalized in India by the Navte Singh जो जो रिसेंट केस ता होची तांगा ना होची बोली गली तांगा ना डायबिटीज जानते समझते हैं तब आर्टिकल 21 इज एसोसिएटेड विद द राइट टू डिग्निटी इट इज करेक्ट अब आंसर है जो सी 24 मो बे सा गण नंबर करे जोची तो आपन टिके थैंक यू रामचंद्र सो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है थैंक यू सो मच ऑनर सर इसमें ऑनर थैंक यू सो मच फॉर लास्ट रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम करबे एंड तापर हमें विल गो फॉर द टोटल केते हमर रहिबो कट ऑफ केते जीवो सो ता पूर्वरु मु देखुतली ये रे किसी जन पचारचंती मंगल पचार सर ग्रीन वॉशिंग माने कोन ठीक अछि सो ग्रीन वॉशिंग बेसिकली जदि मु क्वेश्चन नंबर जिबी it is 63 but I guess greenwashing 63 रे greenwashing is basically the private companies माने कोन करचंती ताका प्रोडक्ट सेल करिया पे ताका प्रोडक्ट सेल और सर्विस करिया पे समाने greenwashing करछ प्रोडक्ट सेल और प्रोडक्ट सेल सर्विसेज करिया पे समाने ऑपरेशन थ्रू रे कहउचंती कि नाही आमा प्रोडक्ट बहुत भलो एंड इट इज मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सो दिस इज वन काइंड ऑफ चीटिंग मार्केटिंग प्रैक्टिस और वी कैन से डिसिप्ड मार्केटिंग प्रैक्टिस that is why it is called the green washing मन रखला green washing से स्टेटमेंट को जे green washing से रे एटा को थरे हम कहूची एटा तमर green washing कांसेप्ट तमरो
केते नंबर 60 27 सर नेला बेले एटा थिला तो एटा 70 आई थिंक ग्रीन वाशिंग टा जस्ट मिनिट ग्रीन वाशिंग क्वेश्चन टा थिला तमरो 50 ओ सॉरी हाँ यस 56 नंबर थिला क्वेश्चन टा हम देखि दोजु 56 रे एठी मु जो क्वेश्चन टा पचरा हितला इट इज 56 राइट हाँ 56 47 then yes एटा जो ग्रीन वाशिंग एटा ए क्वेश्चन टा मोइट को ग्रीन वाशिंग गेला प्राइवेट कंपनीज माने तांको प्रोडक्ट सेल करिया में एटा करंती हैला सो दे आर चिटिंग वन कोन हमर सब जिंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो दैट इज एन ग्रीन वाशिंग सो एटा मन रखियो से न्यू इमर्जिंग कांसेप्ट हैला ए कांसेप्ट रे चलछि सो 96 नंबर क्वेश्चन मु देखिबी 96 नंबर क्वेश्चंस 96 number questions देछि कि which of the following is an oviparous animal actually this is जदि देखिबो कि हला 96 रा में देखिबो it is your platypus हला it is your platypus c is the correct answer काहे कि platypus कोन करे egg lay करे हला it lay eggs हला lay eggs it कोन करे platypus basically oviparous माने कोन laying eggs हला laying eggs माने अंडा दिए but feed माने स्तन माने इट्स जस्ट जदी कहबो कि लैक्टेशन कर माने स्तन योर देना फिजिकली फीड करे से ठीक अछि मिल्क सिक्रेट करे तार बेबी के सो दैट इज व्हाट ओविपारस एंड बेसिकली प्लैटिपस कोठी प्लैटिपस जदी हम देखिबा कि ऑस्ट्रेलिया रे मेजर देखाबे 97 क्वेश्चन देछि 97 रे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ITC is intertropical convergence in a high pressure zone where the trade winds get converged. एटी भूल गेल this is not an high pressure, this is basically low pressure. काहे कि ना हमें जानि चंदे intertropical convergence zones केते 0 ରୁ 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर रो 0 ରୁ 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ रे ITCZ लाइन टा this is your ITCZ basically एटा को कहा जाए बट एटा देला high pressure is basically low pressure, it's a low pressure. So statement 1 is wrong हो गया. So एटी ध्यान देला तमे the convergence of trade winds rising current characteristics बिल्कुल करेक्ट convergence करे एपटू विंड आसे ऊपरू तळू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर सो देयर इज एन कन्वर्जेंस ड्यूरिंग जुलाई माने समर सीजन कथा कहै समर सीजन रे हैला एटी कते चालाक रे से माने पकैचंदी समर लिखिन जुलाई पकैचंदी हैला मन रखो हमर दीटा जुलाई गोटे आ गोटे हैला तमरो जनवरी सो नॉर्थ विंड्स ओवर द इंडियन सबकंटिनेंट सो एटी बिल्कुल करेक्ट. It is an associated with intense convective activity and cloud formation. This is also correct, of course. Hala convect. So ketata correct? Only 3. Tinta hi correct. So answer is your C. 98. Consider the following statements regarding jodi dekhiba the ecological and geographical settings of Lake of Odisha. Kanjia Lake associated with the Nandankanan Wildlife Sanctuary near Bhubaneswar. This is correct. Then Sara Lake lies coastal district Puri. Bilkul correct. Influenced by the geomorphology. Then third रे अंशुपा लेक कटक डिस्ट्रिक्ट मानती बिल्कुल बट एठी देला जो ई जो दर पाटा लेक एठी भूल गेला इट इज नॉट इन गजपति दिस इज बेसिकली गंजाम और बरहमपुर ये रे अछि एसेट बेसिकली गंजाम प्लस बरहमपुर को किछ टच कर बरहमपुर को सो एठी भूल सो आंसर इज ओनली 3 सी इज द करेक्ट आंसर राइट सी इज द करेक्ट आंसर 99 जदी देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ओडिशा हैज ऑलरेडी TFR. This is correct. TFR level जदि हम देखो it is 1.8 TFR level अछि आज पर NFHS level हला NFHS जदि हम देखो national. So this is correct. Demographic divided in Odisha contingent to labor and Odisha are significantly than average. बिल्कुल this is also correct. Then the aging index of Odisha is projected in case of sharply by 2041. This is also correct. Aging population जदि हम देखो then migration from Odisha to other states predominantly circular and main dominated leading to the your feminization of agriculture in resource rhetoric. Absolutely correct. So answer jodi dekhiba it is like D for Delhi. All are correct. Last questions mu karibi. Last question jodi हम देखिबा कि as the following statement tribal India जदी देखिबा demography of policy and implication of Odisha. PBT जो पर questions बिल्कुल Odisha particular 13 out of 75 nation. This is correct. Odisha total number 13, total India 75. Reverse migration during COVID-19 resulted in temporary increase in the dependency ratio district of Odisha. This is also correct. Odisha's policy of PBTC development through habitat have been circulated ignore PBTC members work. This is also correct. Last the decadal growth rate last fourth of statement देखिए ST population is higher than the non-ST population due to improve. बिल्कुल absolutely correct. So देखिए all are correct. So answer is your D for Delhi. All are correct. D for Delhi.
अच्छा वर्तमान सरला तो बिल्कुल लास्ट को जदि मुझे एनालिसिस करी है लास्ट को जदि मैं एनालिसिस करवा कि कौन रहिबो हमर है कौन रहिबो व्हाट इज द योर जदि देखिबा कि कट ऑफ केते रहिबो बेसिकली कट ऑफ केते रहिबो एटी मैं लिखि दोची कट ऑफ स्कोर फॉर ओसीएस है कट ऑफ फॉर है कट ऑफ स्कोर फॉर ओसीएस प्रीलिम्स है फॉर ओसीएस 25 प्रीलिम्स केते रहिबो एतर का केते रहिबो एटी मैं लिखि दोची कलर चेंज कला और बेटर रहिबो हला तो टी केते रहिबो जनरल मैं लिखुची जनरल ये बढ़ेगा हां जनरल देन हला जनरल परे जदि मु नेबी जनरल रो मेल आउ फीमेल ठीक अछि ओमेन मेल ओमेन मेन देन जनरल परे ओबीसी देन एससी एसटी बेसिकली तो ये बेसिकली मैं डिवाइड कर जनरल जदि मु नेबी जेतु स्कोर बहुत ही आई थिंक इट इज विजिबल टिके मोर कलर चेंज कर जनरल में ऑथरे आई थिंक एटर बेटर देखाउ छी भौची टिके एठी मु चेंज करते जनरल एठी मु लिखि दोची जनरल हला जनरल देन ओबीसी और एससीबीसी जहाँ भी तीटा के सेम रे आसी बोले नहीं देन एससी आउ एसटी इट 1 2 3 4 मत यदि कहबो मेल रो बहुत ही कम जीवो एंड दैट इज मु कहबी 50 रु हला जदि मु कहबी कि जदि हायर साइड धरिबी 60 हला 60 प्लस जीवो और जदि लोअर साइड में रेंज जदि मु कहबी टोटल रेंज हला जदि मु एटा कहबी एटी कि 60 जो मन रखिछो से माने पूरा सेफ बट जो माने 55 रु 60 भीतर रोच जनरल मेल डेफिनेटली तुम पाइब रेंज डेफिनेटली ओमेन मानकर जदि जीवो इटी मु कम नोच टिके हला कम रे कना 50 प्लस रे तमे रहिबो इवन इफ जदि इफ यू गो टू द 45 देन देयर इज नो प्रॉब्लम ठीक अछि 45 रु 55 मु रेंज नेबी कारण क्वेश्चंस बहुत ही कम आसी हला फीमेल ओबीसी जदि मु नेबी इट इज अगेन ओबीसी रे जदि मु नेबी अगेन 45 रु 50 भीतर जनरल मेल जीवो ओमेन मानकर 40 हला 40 रु जो माने 45 भीतर रखितो डेफिनेटली इट इज हला सेठी रहइबो एससी जदि मु नेबी नियर अबाउट बहुत कम स्कोर जाइछे नियर अबाउट मु 35 ठीक अछि 35 रु जो माने सेफ रहइबो 35 रे और एपट जदि मु नेबा 30 रु 35 हला मेल जीवो वोमेन मानकर मु नेबी एतरे 25 टू 30 क्वेश्चंस रो लेवल देखि मु स्टैंडर्ड कहूची एसटी जदि मेल देबा एसटी मेल रे हला एसटी मेल रे ठीक अछि एसटी मेल जदि मु देखिबे इट इज बेसिकली 25 जदि रोचो पूरा सेफ ठीक अछि आउ एटो जदि मु नेबी 25 20 टू 25 भीतर मु प्रेडिक्ट करबी एससी मेल आउ वोमेन मानकर नेक्स्ट मु जदि कहबी इट इज नियर अबाउट 15 और 25 भीतर जो भी रहबो 15 25 भीतर फीमेल जाय परबी बाकी जो समान जीवो कैटेगरी की जो सर्विस होल्डर के पीडब्ल्यू जीवो से मानकर सक्सेस माने प्रोपोर्शनेटली कम जीवो होरी ठीक अछि सो दिस इज जदि मु कहबी दिस इज द कट ऑफ सो वर्तमान एटा मु कोन पे इथि कहली बिकॉज़ क्वेश्चंस लेवल वाज रियली टफ तमे बिल्कुल भी इथरे घबरेवर नहीं जो मान रति सैक्रिफाइस करछ प्लीज प्रिपेयर कर दो प्रीलिम्स देखो एटा केवल मेंटल गेम सिविल सर्विस जदि देखिबो प्रीलिम्स ओपीसी कुछ मेंटल गेम क्वेश्चन वाज रियली एक्सेसिवली चैलेंज मु कहबी एमती यूपीएससी स्टैंडर्ड पकि बिल्कुल जे डरिबा नै जो माने एतिक रेंज रे आसतो डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर इट मन रखो जहां तुम संगे रही समस्त संगे जेटा हेछि हला सो नो नीड टू बी एकदम खाया पिया छाड़ने टिके 2 दिन रिलैक्स करो डेफिनेटली जॉइन करो पुनी हला तमरा मेन सी रे जो भी तमरा लेखा प्रैक्टिस अछि सी सेट समस्त ने भलो जाइथो पास मार्क्स एटा देयर इज नथिंग हला कहिबार बेसी किछि नै सो एति कहि कि मु आज रखुची एबे पुनी विल अगेन कंटिन्यू पुनी अर्ली नेक्स्ट ईयर मु कहिबी पुनी अलगा हमें पुनी ई करबा एंड रियली आई एम थैंकफुल टू सतेज सर और रामचंद्र को हला सो फॉर देयर कोऑपरेशंस ओके सो टोटल होप जो भी जिंस रही थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन अगेन विल मीट अगेन ठीक अछि ठीक है मन दे की पढ़ो हला ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच